All right. So hope my screen is visible to everyone, right? Yes, it is. Okay. Thank you. So we'll welcome you all once again in the Gwinnett Technologies. And today we are going to start like a very fresh batch, that is a CCNP in core, right? And this module is going to be in two parts. First in CCNP in core and another is CCNP NRC. So basically, as per the new syllabus, right, we have to do a lot of understanding about the network infrastructure, automations. Like we have some routing switching concept, some SDN concept. So as per the Cisco syllabus, right, whatever we have, we are trying to bring this training, and we'll try to go like exactly the same like process what we have to follow Cisco blueprint, and we'll try to cover. So I'm just quickly showing like what are the topic we are going to cover in this particular CCNP in core and NRC. So this is just we are starting with the in core. So in core having some pure flavor of the all technologies like routing, switching. You are going to get like some sort of the architecture, virtualization, infrastructure, network assurance, and security. And this is going to give very detailed understanding about your any kind of the design, like how the low level design is look like, how the high level design is going to look, what is the wireless networking principle is going to look like, SDN solutions means overview. It's not going to cover entire SDN like flavor here, but at least you are going to understand what is the SDN, how it is going to work, what is the SD access, QoS configuration, wireless, everything. And if you have something like uh, infrastructure like EIGRP, switching, routing, that sorry. So if you have uh, um, a great understanding, you want to build your knowledge in the network layer 2 and layer 3 technology, that all EIGRP, OSPF, BGP, again wireless in very detail. So these are the new syllabus, right? And as that we have the security, we have some kind of the ACL COP policies, authentication, and then finally we have the automation part as well. So we are trying to like give entire flavor which is just aligned with our Cisco. So we want like you guys should be actually ready to work with the trending technology as per the latest market trend. It's not like we have the legacy like syllabus, which is just going to give the legacy infra knowledge, right? Not like that. So once you have the in core knowledge, because it's mandatory for the any CCI exam as well. Means if you want to become the CCI, the in-core exam is mandatory. Without CCI, means CCNP in core, you cannot go CCI exam. And one more thing has been changed recently in CCNP in core. Earlier, it was just examination was in format of the MCQ, right? Multiple choice question. But now they have added the new format where you have to give the labs as well in the CCNP in core exam. So that also you have to keep in mind. We'll discuss more about it, how it is going to look like, and the practical scenario is going to come. But yes, this is for the in-core, and in-core, everything we are going to cover as per Cisco syllabus. Once you are good in the in-core and you want to become the advanced routing engineer, where you want to learn the BGP, OSPF, DMVPN, some sort of the MPLS, and you want to become the champion of the IPv6, EIGRP, so layer 3 technology, VPN technology, infrastructure security. So these all are going to cover in the NRC. That is our second module, and that is going to be start after this in core, right? So in core is the first step. Then we just jump in the NRC and we'll discuss about the layer 3 technologies. We are going to discuss about that VPN technology, like what is the MGRE, IPsec, DMVPNs, like, and also MPLS concept. Then we'll discuss about the radius, TACAX, how this is going to be look like, an SNMP configuration. Like it's also going to cover in core, but if you want to do more in the troubleshooting scenario and more advanced, like how it is going to integrate it in the real life in the routing scenario, that is going to cover in the NRC. So it is like highly recommended. If you want to become the complete CCNP engineer, you must have to do these two modules, CCNP in core and NRC, and then you are going to become the like CCNP engineer. And let me show you something else. Cisco certification blueprint, so you guys have some kind of the idea. So here is a learning path you can see. So why I'm
talking, these are the very important, because as per the official, if you want to refer the Cisco documentation, let me see what happened. Okay. It's too big. Let me open again. So here you see. So if it is getting too big. Let me try to minimize from here. If I cannot do that. Let me try one more time. So let me show you. So after CCNA, we have the professional exam, and we are talking about the CCNP Enterprise in core, right? And this in core exam is mandatory. You can say for the CCI exam, CCI, if you want to become the CCI Enterprise infrastructure, that is mandatory. And also, if you want to become the CCI Enterprise Wireless, that is also mandatory. That's why in core is the like Bible of this CCNP or CCI. Without doing the CCNP in core, you cannot go CCI as well. So this is the first step. Always have to follow this particular blueprint, and after going through that blueprint, you just have to be, further upgrade yourself in the advanced routing. You want to become the SDN engineer, you can become the SDN engineer. Yes, Jignesh, you asking something? Okay, so Manas sir, I'm just handing over to you, making you the host. You can continue from here. Okay, sir. Please Thank make me the host. you. No Yes. problem. Let me. Thanks for the introduction. Yeah. Let me just give me 1 minute, sir. Let me make one co-host and let me make the host. So you are the host, sir. You can share your screen and you can continue Yes. from here. Okay, I will start. Okay. Thank you. Welcome, sir. Hello, everyone. All good? Hello. All good. All good. Okay. So let me give about a small introduction about myself. Actually, myself, Manas, and I am a working professional and more than 10 years of experience. Actually, my core profile is in the enterprise and the including routing part, switching part, and the SDA part, and the wireless and the data center I'm working. So I have more than 10 plus experience. And can you give a small introduction about yourself one by one so that I will be aware about your background? Accordingly, we will proceed. Just one by one. Hello. Am I audible? Yes. Okay. So let me ask the name. Okay, let me share my screen. My screen is visible? Yes. Yes, sir. Okay. Okay, so all the people are aware about the CCNA? Because I am under impression that everyone is aware about the CCNA. Yes. Okay. Okay, so let me give about the introduction part about the Encore. Okay. Okay. Okay, so first we will start from the, it's already highlighted. First we will start from the Encore part. Okay, so in CCNP, previously it was in routing and switching part. And right now it is somehow similar, but Cisco made some difference about 30 to 40%. So they have introduced like this module. These are the completely Cisco blueprint syllabus. So first we will take care about the architecture. So how the architecture actually looks like, how the DC architecture look like, how the remote site, if you are working on a remote site, because someone is in fresher, they are will work on the remote site, okay, not on the data center site. So these things we will take care what is the actually tier 2 and the what is about the layer 3, means tier 3 architecture, and what is the fabric part.
Okay, so it's something different. So how the fabric part will look like, and DCSCI, if someone heard about the DCSCI part, so there you will heard about the fabric part. Okay, these things we will take care, and the cloud means how the device will be hosted in the cloud. If you heard about the AWS part, these things, but this is somehow in the theory part. Okay. So then I will take care about the FHRP. So anyone heard about this technical word FHRP? Hello. Can anyone answer? Anyone heard about the FHRP? My side said no. I'm not aware about Any? the FHR. Okay, no problem. Anyone? Okay. So actually in CCNA, this was the topic, first of redundancy protocol. Actually, it's a redundancy protocol. If you heard about the HSRP, anyone heard? HSRP, VRRP, and for the load balancing part, GLBP. Yes, yes. Okay, so that is under Correct. FHRP, the HSRP and the VRRP part. Okay, that is under the HSRP part. Now, anyone heard about this SSO? If anyone working on the wireless technology, so he is about the SSO, stateful switchover. In the firewall also it is there. So something like the HA scenario, high availability. So we are mainly we are using in the, suppose you are using in the 9800 wireless. Okay. So there we need to put the both the WLC, both the controller in the SSO mode. So if one will be failed, then another will be switchover. Okay. Active standby mode, the SSO scenario. So these things we will cover on this topic. Okay. And again, I am highlighting that in the encore maximum are the means 50% or 60-40%, the theory and the practical. Okay, because encore you need to learn all the things so that you will be aware about the wireless part and what is about the SDA part, because SDA is a new technology and market is booming right now, because right now your LAN network, the legacy network is moving towards the SDA. So you have the DNAC. From the DNAC, you need to control all the things. You need to onboard the device on the DNAC. Then you need to do. That is the SDA technology. I will cover this part also. I'm going one by one. And meanwhile, I just want to know one thing. All clear about the subnetting part? Some clear. Okay, okay. Okay, then it will be good, because why I am asking this question, because in Encore it's okay if you know about the basic subnetting, because the requirement is like that. Suppose you are in the client meeting, because I'm giving you a practical scenario, because if only I will tell you that what is FHRP, what is SSO, then you cannot clear the interview. Okay. So meanwhile, on after every class, suppose today I will cover, because today I will cover all the entire syllabus. I will give you a blueprint about that syllabus. Suppose this one, FHRP or SSO. Okay. So if I will only tell you that what is SSO, in WLC we have the SSO, and you need to, I will give you the command. Then if it, after that, if it will be over, then you will not clear about the interview. Okay. So after every topic, I need to tell about what is the practical issue, what is the troubleshoot, because you know on the Encore there is means very less practical and troubleshoot is very less. But if I will go like that, then to clear interview is very difficult part. Okay, so what I need to do after every topic, FSRP or SSO, so I need to tell you what is the real issue generally we are facing, because mainly I am working on the wireless part, enterprise part, and the data center part. So regularly I am facing daily issue. Okay, so we need to see that part. What is the issue? Suppose in SSO, someone will ask you if my SSO is failed. Okay, what will be the issue? If someone will ask that I don't want, I cannot give you, client tell you I cannot give you the downtime. Okay, but in my wireless, suppose 20 access point are connected. Okay, I cannot give you the downtime because it's my data center. You need to upgrade the iOS one by one without any fail. So what we will need to do? This type of question actually generally right now the interviewer asking. So we'll cover that part. On every topic, I will tell you what the interviewer asked, and generally 5 to 6, 7, 8, the real scenario, a live troubleshoot. Okay. So let me start from the one by one. Anyone about the architecture policy? How the Cisco recommendation architecture, but generally
company are not following. Can anyone let me know what is the standard architecture? I think 3-layer architecture, sir. What is three-tier architecture? Please tell. If someone will tell, then it will be very good. So everyone will be aware about that part, and I will also explain. Okay. So let me tell about the three-tier architecture. Okay, just let me start a pen. Today I will just give the whole introduction about the Anchor and the NRC part. Okay. Then from tomorrow I will start one by one topic. Okay. Good for you. Everyone is comfortable. Yes, sir. Okay. Yes. Okay. I'm not writing all the details because a lot of syllabus are there I need to cover. So you can just imagine that these are the router, okay? Router or L3 switch, whatever you can tell. So if it is a L3 switch, then either it is in VSS, VSL, or sorry. Okay. And then let me put the internet. Suppose this is the internet and connectivity is here from here. Primary, secondary is there. Okay, and your IPSL is configured. That is the latter part. I will let you know. Okay, suppose this is your cloud, this is your internet, and you can just a minute. Okay, and you can imagine this is your router. Okay, and this is or the L3 switch, and is the distribution layer switch, and these are the access layer switch. Okay, so actually this is the Cisco recommended. First, you need to put your L3 or the router or whatever your switch. Right now, site are migrated to the SD-WAN. So they are putting either the Bursa box or the Cisco Viptela, okay, or Velo Cloud, whatever they are using. And after that, this is the distribution, okay. And from there, the access is getting connected. From the core, nothing is connected to the access layer switch. This is the Cisco recommended architecture. Why? It is very simplification. For a network engineer, he can easily understand how the traffic is getting flowed and no complete impact on the router. Okay, if I will put all the access layer device, there will be an impact. Your memory utilization will be very high. Okay, so this is the scenario. In a real class, I will let you know all the things, how the traffic is getting flowed. Okay. So my question is to you. So what happened if this link will be down? Anyone explain? Is there any network impact? Oh, no, I think. Okay. Anybody, any answer? Just share your thought so that it will be very good. Suppose this link will be down. Any impact? No, sir. Okay. There will be no impact because this is already connected. Either it is in the port channel. What? What? Anyone asking anything? Hello. Anyone is asking anything? Okay. Okay. So if this link will go down, there will be no impact because traffic will flow from this network. So either it is in the port channel. Suppose this is in the port channel. Okay. So you have heard about the port channel ether summary, ether channel?
All clear about the EtherChannel? Okay, please tell if anyone is aware about the EtherChannel, please tell, else I will explain. Okay, no problem. So in EtherChannel, what we need to do generally, we need to find the link. Okay, so for that, your LACP is there, PSGP is there, so that we can make it as one. So if one link will go down, the traffic will flow from this end. Okay, when I will tell this, let me explain. Write my notepad. Just a minute. Okay. So actually, when I will tell you the this traffic flow, same time I will let you know what is the EtherChannel, but it's a CCNA in CCNA syllabus. Okay, because suppose if you have heard about the LSCP protocol, PSGP protocol, what is the Cisco standard, what is the non-Cisco standard, so you will aware about that. But no issue, I will let you know about this topic. Okay, LSCP and PHP. But in the same time, I need to highlight to you what is the command, because for every here actually in the CCNP Encore, like their virtualization and this is in the traffic flow, what is the Cisco architecture, but you need to know the command, because interviewer will ask to check the EtherChannel. So what should be the command? So you need to know, so EtherChannel summary. Okay, this is the command to show you the, then after that he may ask you, so how it will be look like under the command. So what if you will ask, what is the meaning of P, what is the meaning of D, and if it is means not in the port channel state, what it's be look like. Okay, so these are the things practically you need to know. I will show you in my lab, and same time I will highlight you what is the issue. Then same time he may ask you, suppose my one link has been failed and another is the error disable state, what is the issue? And if it is the error disable state, what is the cause of error disable state? You need to know what is the SFP issue, what is the SFP difference, means GLC SXMMD, GLC SXMMD, which SFP you need to use on the both side. Every practical thing I will let you know in this topic. Okay, so and this is the 3-tier architecture. Okay, but generally company, what they are doing, if you have only 100 people, this is mainly a data center technology. But if you have only 100 people on your network, so no one will want to spare a lot of cost for this environment. Okay, so then that time what they will do, simply cross. Okay, so then this will be a distribution core. This will be behave as a distribution core. Till now it is clear to everybody. Yes. All other, if any doubt, please let me know. Sometime I need to clear, because this is overall I am giving you, but it's very important to know the traffic flow in the data center network, in the legacy network, and how the traffic will be flow in the SCI network, SD-WAN and SDA. So please be attentive and let me know if you have any doubt, because it's a completely practical and interview based questions. So please, if you have any doubt, you can let me know. Okay, so I am under impression that all is clear. So let me proceed now. So if you have only 100 people, okay, so what will you do? It is distribution and the access layer is getting connected. So everything here L3 is means ERSVI is created here. Either it is VSAS or it is the SVL. So this will be there and your access is connected there. Now come to the third point. This is the tier 2 architecture. Okay, now come to my third point. Suppose I have 10 people. Anyone, any idea what I need to do? Only 10 people. Sir, I joined late, sir. No problem. You want me to repeat it again? Yes. Okay. Let me I give have a. also joined. Just if you don't mind, can you repeat for us? Yes. I am repeating. No problem. Let me. You joined just now? Yeah, just Okay. No problem. Okay. So only for you, I am giving it again. So if you have any doubt, please let me know. So this is a CCNA Encore. Sorry, CCNP Encore. Encore is mainly about your theoretical part and overall all the knowledge you need to know, because here
Your SDA is there, your SD-WAN is there, automation is there, wireless is there, BGP, OSPF, everything. But if you will go through this Encore syllabus, maximum time you will find this word: describe, explain, and here describe, configure, means it is the practical. Okay, again describe. So this is somehow 60-40%. Okay, but it's very good in the Cisco, that is the new Encore is very good, very impressive. Why? Every technology you need to know. You need to know about what is the virtualization. Okay, what is the VM, and what is the hypervisor, what is the type 1 hypervisor, what is the type 2 hypervisor. Okay, what is the teaming? These things you need to know on the new Encore. But this is 60-40. 40 will be practical, 60 will be theory, but all syllabus will be covered. Once I will give you this introduction, I will go to the NRC. Okay. So first I've already highlighted this. This is in Cisco recommendation. They are always highlighted the Cisco Tier 3. So you know about the Tier 3 architecture. What is the level 3 Tier 3 architecture? Sir, I have some questions, sir. I have one question. Yes. Sir, I have never learned, sir, CCNA. I can join, sir. Yes, you can join, no problem. Meanwhile, whatever is the issue, same time you need to highlight. Okay, because what is the Encore syllabus? What is the benefit? So actually this is a very basic. Okay, a lot of theoretical part is there, but if you have any issue, like suppose I will come to the BGP for an suppose OSPF example, same time I will let you know what is the static route, what is the default route. Okay, and if you want, we can share you some document, you can go through it. It's your benefit. Okay. So okay, so you joined late. Yes, sir. Yes. Sir, only I have some doubt. I have never learned CCNA. Right? I am directly learning CCNP in core. So You some have problem. some basic knowledge about the CCNA, about the subnetting part. Sir, little bit, sir. Little bit means suppose anyone will give you what is the IP in the usable IP in the /26, means very basic, you know, and what is the okay, then it will be good, no problem. So same time I will let you know about the means some basic subnetting. Okay, if I will Yes, get sir. time every class. Already I have Okay. highlighted that this is a theoretical means 60-40. But Okay. if I will tell you, suppose this one, okay, if I will tell you what is the Cisco Tier 2 architecture, what is the Cisco 3-tier architecture, and your interview will come, okay, you will attend the interview, and interviewer will ask, suppose this is a 3-tier architecture, and for an example, okay, this link went down, what will be the issue? If I will tell you that since the Cisco architecture, router should be there, switch should be there, from the distribution it will be connected, and this is the Tier 3 architecture. If I will tell this much, you never tell you the interview what is the impact if this link will go down, if is this link will go down, and how these are getting connected. So it's a completely means practical based class I will take. Okay. So right now, any other person, I think one person has also joined late. Yes, I have. Yes, yes. You can Okay, carry so on. okay, so you know about the Cisco Tier 3 architecture? No. Okay, so let me explain again. So this is the Cisco T actually recommended architecture, but 50% company are not following. If they have only 10 people, 50 people, it's not recommended because it's a lot of cost is very big in this So scenario. you are talking about HA or No, primary, secondary? Yes, HA is a different thing. HA here you able to know. Just let me not show you. What is Tier 3, sir, and HS, sir? What is Tier 3 HS? Yes, Tier 3 means your core will be there. Okay, let me write in the notepad so you will Yes. this. First, your core will be there. Then distribution will be there. Okay. Then your access will be there. Yes. Yes, and all will be in the redundancy. Means it's HA, you can tell it's redundancy in switchable. Generally, we are taking about either it will be in the stack. Let me write it here. If you are aware about this word, you can let me know. Stack, you know. Stack, you know. Anyone? What is stacking? Yes, a little bit idea about Okay, stacking. just explain what is stacked. Means they provide redundancy. Means one switch any issue, so you secondary switch it in as a active mode coming.
I like little bit idea about. Okay. Let Will me. give the Anyone? redundancy, I guess. Stacking is Okay. gives the redundancy, I guess. Yes, Okay. redundancy you can call. Okay. Any other idea? Any other one? Any other idea? Sir, Sir, hello. Yes. Go ahead. where Installed. put the switching, sir? Switch What? put it. One by one. Okay. Tell me. Switches will be installed in a series. If one switch get defected or not working, the network will start from the other switch without any changes. Okay. Suppose I have a one. Suppose I have a 2960 model. Another one is 3500 model. 3550. No, It will that work. will not work. That will not work. The Okay. Not work, model not and the manufacturer will be same. Then And the other things, what will be same? One is manufacturer will be version, same. Then version also same. yes, Version. model will be Model. also same. iOS Um, will also be same. Yes. Okay. These And are the it is main. working only single IP. You can configure first primary IP and primary switch. It's work like as a what we call. No. It's Oh, you are not 100% right. So okay. not need to configure the switch one by one. You know about how the stack Yeah, looks like. means so we configure only one switch. I mean primary switch. No, Configure suppose one. I have suppose like this interview will ask. Suppose I have two switches. How will proceed for Okay. the configuration about the stacking? Suppose I have a 9200 switch. Okay, catalyst, and you want to proceed for the stacking. So what is the first step? Because this type of right now the interviewer are asking this type of question. So no one will ask you what is stack. Suppose I am giving you 29200 stack. Okay. So how it will proceed? Let me show. You can see right now the 9200 stack cable are look this like. Yes. Okay. And what you need to do, you need to do a cross connection. 1 to 2, 2 to 1. Okay. When you will power on the switch and you will put the power cable, sorry, a stack cable. Power cable is already connected. And when you will put the stack cable, the stack will automatically come up. You don't need to do anything. But first switch you need no configure and then No, that is the configuration part. That is fast. According to the Mac, it will be the active standby mode. But what you automatically need sync. to, yes, Okay. automatically sync. Stack will be, but and for the Mac address, it will be the primary or secondary, active or standby. But what we need to do, switch one, all the switch will be first switch one and switch two. Okay. Then what will be the command? Switch one, priority. Okay, right. Oh, yes. Priority 15. It will be your active. Okay. Switch to priority 14. Okay. Then it will be your standby switch. This is the manual configuration. But if no one want to do the manual configuration from the Mac, it will take the active standby. Okay. So it's clear how the stack will be configured. Okay. Yeah, right. Okay. Thank you. And actually this is the practical test. And in the later Is stage, it like active passive kind of thing, or it is? yes, you can tell active passive. It's actually active standby member. But the you can failover this primary will be up, then the passive will automatically come in a passive mode, right? Standby will be automatically active. But the issue is that, again, I am highlighting, the issue is that what is the main benefit of stack? It will increase your port number. Yes. Yes or not? Yes. Yes, right. Yes. But no one told me this one. It's actually the main purpose, increase the port number. Okay. And I can enter into one switch and I can see something like GI1/1/1. Then it will combine both the switches ports. Yes, it will With a combine both single the IP. With a single yes, IP. yes. IP will be single, and for the second switch, it will be look like this one. And for the third switch, GI2, 3/1/1/1. Okay. But the issue is that active will be failed, then standby will be active. I am agree with you. But the issue is that here the complete port will be down. You got my point? On this switch, if it is a hardware failure, so my complete this port will be down. Yes or no?
Yes, true. Yes, sir. Yes. So why Cisco is recommended for the redundancy? Suppose there is a uplink. Let me go to my test here. This is the router, two router, okay. And suppose these two are 2960 or 9200. These are connected on the stack, okay. And suppose this is a one router. Now come to this part. This is only one router, and this is only, suppose two links are connected directly on this switch, okay. And this switch will be failed. This will be the active. This is, suppose this will be the passive. Right now this is will active, but in the inner people, the downward people will get the internet. Yes or no? If they are connected with the switch which is down, then they will not get the internet. Right. You got the point. Actually, suppose all the links are connected here. Suppose I have two uplink, okay, and all are link connected on this switch, and this is in the stack, active and standby, and this switch will be failed. Right now, my passive will be migrated into active, but in active there will be no connection. Then what will be the benefit? Your switch will be remains up, but there will be no connectivity, no internet, nothing. This whole site will go down. It's clear to everybody what is the issue here? Yes. Yes. Now anyone can tell me how we can overcome this situation? Any idea? What we can do? Suppose I have, this is either a router or a SD-WAN box, whatever. I need to connect one link here. Let me change the color. I need to one link here, one link here. Okay. And I can make this as a port channel. No problem. Because this is a stack, means single switch. I can make this as a port channel. If this link will go down, my traffic will be flow from here. It's clear? To say on the router or the firewall, Yes. We will do the lower kind of thing. If any one link will be down, the No, other. that is the different thing. I'm not going to the one part. That is the primary, secondary thing. Leave it as of now. Don't go to the one type now. This is a one network, and this is a LAN network. Right now, I am under the LAN network. Okay. So please be here in the LAN. Don't go to the upper side. This is the different scenario. Your primary will be failed, secondary will be there. From the AD we can set. From the static we can set. We can keep the AD. Okay, we can do that. This is the latter part. In NRC, I will tell all the things. These are the uplinks only, right? Yes, I am telling about the uplink. Let me put a new diagram. Okay. Let me open my sorry. Let me put one notepad there. I can make you clear figure. Okay, now come to my point. Suppose this is the your router. Okay, it's got it, and or the SD-WAN box, whatever. And now this is the switch. You can imagine this is a 9200 distribution or core switch. Okay, and this is under the port channel. It's clear. Now the access switch are there. How link is connected? Here, it is connected. And same like from this switch also, okay? And right now my question was that suppose two uplink from the router or from the SD-WAN, okay? And you can see this is here in the port channel or two is connected because it should be in the port channel, and this is in the active standby board. This is in the stack. If this switch will go down, will my people get the internet? Will I get the access? No, sir. No, it is clear to everyone. Please tell. No, sir. No. Okay. Now, how I can overcome this situation? What I need to do as a network engineer, you need to give this idea to the client because client completely non-IT. Okay, he's not aware about. But if his connectivity will be out, then there will be a penalty. So as a network architecture, as a network engineer, you need to give the solution. If client is agreed,
that no, we will not buy, you can put this link, then no problem. There will be no penalty on us. Okay. So as a network engineer, what you need to do, you need to remove this link. Yes, sir. And you need to put this here. And right Manually. now, this two link will be under the port channel. Yes, because this is two switch means only one switch. Physically, these are two, but logically, this is one. Am I right? Yes, sir. Yes. So One then, switch is standby mode. Oh, sir, one switch need to standby mode. Yes, in the stack, it's the active standby mode. Okay, but in the VSS technology, I will let you know what is the VSS technology. In 4500, 6500, there is a VSS technology, and in the 9500C, at least there is a SVL technology, switch virtual link. I will provide you the command, because here this is not in Encore complete part is not there SVL, but very basic interview question SVL, because this is a new switch right now in the market. So I will provide you the command. Okay, how to set the domain, how to provide the SVL. Okay, leave it. So right now, what I need to do, I need to connect this link, I need to remove, and I need to put here, and I will put the port channel here. It's clear? Yes, sir. And this is a single logical switch. Physically it is two, I am agree, but logically it is one because it is in the stack. Okay. So if this switch will go down, there will be no issue. Standby will be active, and this traffic will be shifted from here to here, and it will go to the router and router from the internet, and people will get the internet. It's clear? How Yes, you can? sir. Okay. It's clear to everybody? Because very basic question. Yeah. Okay. Okay, router port will be configured at port channel. Yes, we can do that in the router part. I will let you know how the router port will be configured. Actually, what generally we do, we are putting in the, suppose it's the SD-WAN box. Okay. In the real scenario, what we do, suppose we have created a VLAN. Let me write on the notepad. So what generally we are need to do, actually in the real scenario, when you have a SD-WAN is connected or the router is connected and their uplink is connected, that IP should be under maximum /29. We don't want to waste any kind of IP. And this subnet, suppose this is a 10, for an example, okay, 10.1.1, and some IP are there because it's /29, okay, and this will be under one VLAN. Suppose VLAN 999, and I can tell this VLAN as the interco VLAN. Okay, and in the router side, they will configure the spot. Okay, but in the switch side, this is required because in the router they will not put the VLAN, they will put just the IP. They will put this IP, then this IP in the under VLAN 999 in my switch side on that port. I need to configure on that port. Suppose interface GI 1/0/48. Okay, then switch port, because it's the uplink. So switch port mode I need to put trunk. Then this VLAN, if it will be trunk, this VLAN will be passed. Okay, but generally what we need to do on that router and the your core switch, you can put its access. Okay, so that it will be connected to the router and this under the 999 VLAN. Okay, this is the in the practical best. We don't need to waste any IP under the 999 VLAN. We need to put this IP for the interco. These are for the one IP, and you can traffic will be passed. It is clear? Hello? Sir, I have some. Sir, I have no basic knowledge, so I have something I understood, sir. Okay. So configuration part, I will let you know. No problem about that part. Okay, because for the configuration, I need to put a diagram there. Okay. So right now I am giving one by one example. Okay. Actually, let me proceed again. And this is the FHRP. Already I've highlighted other people that what is the FHRP? FHRP is a fast up redundancy protocol. Okay, under BRRP is there, HSRP is there, if you have heard about. And the stateful switchover, what is SSO? If you are anyone working in the wireless part,
So under WLC, we are putting the SSO and how we need to configure the SSO and how, suppose the two WLC are in the SSO mode, how we can upgrade the image, I will let you know, because these are not in this syllabus, but anyone interviewer can ask, I will provide this, how the means image upgrade will be there. You know, in the Cisco syllabus, I have seen that wireless is there, but no one means in the entire syllabus, image upgradation process is not there, but it's the very basic, because if you will put a new controller on your site, I think it will be on the 12 dot something, but right now it is going, I think 17.12.3.3, the latest Cisco standard. So immediately you need to upgrade the image. I will let you know how to upgrade the image through the GUI. Okay, this part will be there. So till now it's clear, everybody? Yes, sir. Okay. Now the next part will be the wireless deployment. Okay, so how the wireless will be work? Anyone heard about the wireless technology? No one? Because everyone is connected through the wireless, through the Wi-Fi. So I think everybody should have the knowledge about the Wi-Fi part. Yeah. So anyone heard about the SSID? What is SSID? Service Set Identifier. SSID is the name of the network where we can connect actually. Yes. So these are the basic things in the NCORE syllabus. I will let you know what is the wireless. Actually, right now, 90% company are migrated to the 9800 wireless, because 5508 is outdated, 2504 is outdated. And I will let you know in my real class, I will let you know what is the difference between 2504, 5508 and what is the new 9800 controller. Okay. So anyone see the new 9800 controller, how it look like? No, not yet. Yes. It's this one. This is the 9800. Yes, Yes. uh, And here 9800L is there, L series or F series, means whether you want to connect through the Ethernet or through the fiber. Okay. So this one you can see fiber port is there. Here you can see fiber is there. Here you can see your link is Ethernet port is there, L series. Okay. Yes. So how means at that time actually the 2504 and the 5508, these are the AROS controller. And right now the 9800 controller is very easy. Believe me, it's very easy because it's complete switch. It's a cut list now. 9800. Whatever you want to configure like this interface VLAN 10, IP address, then IP route, you want to put the static route, default route. So it's completely same the switch, but the technology is different, but the command is very similar to 90% similar to your switch. Just a basic command like how to see the client, how to see the access point, how many access point are connected, like so AP summary. So these are different things, but the basic command, okay, these are completely related to switch because this is the cut list. Now 9800, it's a cut list. This is the main benefit. Okay. And after that, there will be the WLAN design. How we need to configure the WLAN. Any idea about how to configure the WLAN? Anyone know? It's a software-driven configuration, software-driven configuration for the. Okay, no problem. I will let you know how to do the WLAN part. I will give you all the snip around that because there is no lab here, but I will provide you the snip how to configure this one. What is the WLAN? What is the SSID? And what is the issue? Suppose I will let you know that 9800 is the catalyst series, and I will let you know what is the controller means less controller base. What is the how in the cloud we need to put the WLC, how remote branch is getting connected. So it's not good because again interviewer will ask you something like troubleshoot. So if one access point is not getting connected to the WLC, how will troubleshoot?
Okay, so this type of things you need to know in the wireless. So till now it's clear. Yeah. Okay, everyone is clear. Yeah, as of now, we are totally clear. Okay. Okay, now this is the one part, SD-WAN part. Here actually in SD-WAN, it's not complete syllabus is there here because SD-WAN is a completely different topic. But some basic here you need to know what is the SD-WAN, how the SD-WAN first question, how the SD-WAN is different from the normal traditional router. If SD-WAN is very similar to the router, then why company launched the SD-WAN device? You need to know what is the control plane, what is the data plane. In traditional network, control and data are same, but in SD-WAN, how the data and control are different. How the data traffic is going, how the control traffic is going. But in the router, how the control and data are same, how they are the traffic flow mainly. You need to know on the SD-WAN and how your vManage is working, how your vBond is working, how what is the vBond. So everything and how you will put the template. These are not there for on the all the SD-WAN syllabus. But you need to know these things. What is the vManage, what is the vBond, everything you need to know, and how the traffic is passed. Okay, so these things I will let you know when the real class will be start. Okay, now come to the SD access. Actually, the SD access, all the company are not implemented till now, but 15 to 20% company already implemented SDX. And believe me, in the next 3 to 5 years, the market will be boom for this one, SDXs. So anyone, any idea about the SDXs? Whatever you know, you can tell. Means SD access means we handle the LAN environment in the Yes, one. Yes, right? yes, Yeah. you are right. SD, Yes. yes, SD-WAN like we handle the all our routers, man. No. Router. SD-WAN is for the router part. Okay. Yeah, SD-WAN is router. SDX No, is only LAN network. LAN network. So any Yeah. idea how this is work? How the fabric is going? Means any idea, whatever, if people, whatever you know, please tell, so that Yeah. other people will also come to know. Mhm. Okay, tell what you know about the SD access. I have only this idea that we have Okay. Yes, managed the LAN environment. Yes. Yes, you are right. Actually, manage the LAN environment, and I will Yeah. let you know which switch you need to use for the SD access, because you know right now the 9293 at least are coming and they will support the SD access. Okay. Yes. Yes. 932. And yes, and very recommended from the Cisco side that please, if you are using your 9800 wireless, because right now company are using the 9800, they are retired the 5508. So 9800 controllers should be onboarded to the DNAC. Okay, how they Yes. will be onboarded from the netcomp, what you need to do. Because believe me, I am onboarding. Last week I tried to onboard one of the 9800 controller on the SDXs. Everything is good, but the netcomp is failure. Till now that issue is not been fixed. We are checking with the Cisco why this netcomp is being failed. If your netcomp will be failed, then there will be no profit for the telemetry. I will let you know what is the telemetry in the SDXs. Okay. So these things I will let you know what is the DNAC, how this means, suppose I have the WLC, okay, and I have onboarded the WLC on the DNAC, means SDXS environment. Then what will be the benefit? Because all the access mode I can check there, WLC I can configure there, and from the DNAC I can upgrade the WLC. A lot of benefit, like SD-WAN. We Okay. can work with a single dashboard, right? It Yes, means, in yeah. SDSS, it's a single Yeah. dashboard. Yeah. Okay, so you can onboard there, you can see the health there, you can upgrade the image there. Okay, so everything will be happened from the XDXS solution. This is a mainly LAN solution. Okay, in in the one it is SD-WAN, in the LAN it is the SDXS, and is the data center. You know what is the solution is called in data center perimeter? Data center. Data center it is called SCI, application center. ACI. Okay. Yes, Okay. Okay. it's Yes. the SCI mode. In the Yes. SCI, the concept is lip and the spine. Mhm. Okay, and epic So what will is be there. SCI? Yes, So go what ahead. is SCI? SCI is
something your application centric infrastructure, what you need to do, there is a epic is there, okay, in the data center. From that epic, you can configure all the leap and spine, because there is a leap spine technology. Let me put in the notepad. Sir, It's not, Cisco ACI in this same or different? It's Hello? different. I am not telling you. Whatever, I'm not getting you. What you are telling? Sir, Cisco ACI is same or different? This is Cisco ACI. I'm telling in the data center, this is a Cisco. Cisco is the brand. Technology is the ACI. Okay, sir. Okay. So how that look like? This scenario that will be there. Something different. All are cross-connected, okay? Every switch is cross-connected. Here the technology, what is called? It's the spine and leaf. Okay. Endpoint are connected from the leaf, and here one epic is connected. Just a minimum requirement means recommended is minimum 3. This is the epic. Epic, you can log in through the CLI and from the GUI, okay, your ACI environment. Its GUI is easy because CLI is very difficult. So in GUI, you can log in into this switch, and you can know on which spot which server is getting connected, because this is mainly for the server, okay. So you can configure this spot. This is also a software defined network, okay. In data center, it is called the ACI. In LAN 1, it is called the SD-WAN. In the LAN network, it is called the SDA, SDXS. And in the data center, it is called the ACI. It's clear? Okay, sir. Clear. Yes. Okay. Now come to this part, the QoS technology. Okay. So here we need to put some practical and theoretical in wireless, how it is work, and in the LAN network, what means LAN network, how it is work. So you know, any idea about the QoS part? Anybody, any knowledge? Please tell yes or no. Anyone, any knowledge? No, but Okay, No, okay, sir, no. no. Yes, yes, no problem. If you are not aware, please tell me no, so that I can proceed. Okay. yes, yes. Okay. So it is QoS is the quality of service. Okay. Suppose I have some you can imagine I have the video streaming device, and I have some SSC device, some badging device, some security device, and some different kind of network we have, means where suppose video streaming is there, and for other purpose we are using for the SEC is there, means any other application you can imagine. Okay. But what you need to you have heard about, anyone till now, anyone have configured any switch? Yeah, anyone have gone through the switch configuration? No, sir. Anyone? Yes, I have configured some switches, Cisco switches. Yes. Yes, it's completely a Cisco syllabus. Okay. So, and any other? Either you No, have sir. configured or gone through a switch configuration? No, sir. This is my first time. Okay. Any other? Because I can see multiple people are there. 12, No, 13. sir. No. No, sir. Okay. So if you are only one people is configured the switch, so you know what is this one? Have you ever seen this type of word on the switch? D. Not DHCP, DSCP. Yes, sir. What is this? I'm not Dynamic asking what? the Dynamic. no. I'm not asking about the full form. I'm asking about the, because no one will ask you the abbreviation. Okay, no Yes. one will ask Okay. you the full form. Everyone will ask about the working knowledge, how Okay. it's work. Okay. Okay. So I will let you know in my complete class. I will let you know DSCP, because today if I will let you know, I cannot able to understand. Okay, but okay. So now it is the QoS. It's the quality of service. Okay. So if anyone is asking anything, No, sir. No, sir. okay, Just turn off my mobile. Off my phone. okay, you can put on note. No problem. Okay. So if I will let you know what is QoS, if I will just tell you what is QoS, that QoS is quality of service, and what is the purpose of this use, then no benefit. Okay. So you need to know how QoS is work. First thing, whenever you are read, please try to find a solution. What, then how, or why. Okay.
What is QoS? Why we are implementing this? If my QoS failed, what is the issue? Every time it should be you should know what, how, and if it is failed, what should be the impact. In the network, these things are very important to crack an interval. Okay. Now come to this one, QoS. QoS means suppose you have multiple applications are there and I want to look, its main purpose is upper the limit or lower limit. Okay, either upper limit or lower limit. What is the meaning of upper limit? Maximum. Lower limit is below. But something it is different because lower limit is I need to reserve minimum 20% bandwidth for the video streaming device. Then how I need to implement the QoS? I will let you know practically. Okay, when I will teach you the QoS part. But this is the basic thing. Upper limit, lower limit. This is the minimum bandwidth I want to reserve for my video streaming device. Okay. It is a reservation. You can tell it is something. No, for all the technology, it is not reservation. For lower limit, it is reservation. I will let you know because multiple technology are there under. What is policing? What is sapping? What is CBLLQ? What is WFQ? Okay. And what is the nesting? Just a minute. Sorry. Okay. So all this technology are under QoS. What is the use of policing? Maximum bandwidth on the traffic. Okay. And lower limit is the resolution on traffic. Minimum bandwidth. Then if my bandwidth will be reached, suppose 50%, then if 51% will come, then what will be the impact? It will be buffered or it will be simply deleted. What is the CBLLQ? What is the CBLQ and what is the nesting? This technology I will let you know under the QoS. But it's for reservation of some bandwidth. Okay. It's clear? Please tell it's clear. Yeah. Yeah, as of now, sir, we just gone through the words. I hope. Yes. Yeah. Just gone through the words, just the very basic knowledge. So just like why QoS use for the upper limit, lower limit, but just need to aware about the technical words: QoS, policing, sapping, LLQ, CBWFQ, nesting. These things completely I will tell you on my class. Okay, these are just a brief topic. Clear? Hello. Yes. Yes. Okay. Okay, then these are some like routing information based and what is the FIB table forwarding information base. Okay, so these things also will be covered because it's the main part. If anyone worked on the MPLS, is very clear about this part. Process switching, forward switching. What is process switching? What is forward switching? What is FIB? What is RIB? Okay. What is the PSP, penultimate hop popping? These all things I will let you know, but in the MPLS again we will I will show you the practical. Okay, this is the table. Now come to the virtualization. And just I want to highlight one thing because when I have started my career, this was the doubt, and I think a lot of people have the same doubt. Let me tell you one thing because a lot of people are not completely working on the networking deployment. Am I right? Multiple people are working. Someone is working on the SD means service decks, and someone is working on the just means connecting the cable. This type of things, L1 level. Am I right? A lot of people are there. Right. Yes. Yeah. So everyone, when I have started my career, I have started from that one, L1. Okay. So before that, I was also doubt if I will learn only about the CCNA, SSNP, or L, wireless, SD-WAN, SDA. Should I clear the interview? This is the doubt. Okay, because a lot of 80% tutor, what they will do, they will just theoretically let you know, they will open their GNS3. If you heard about the GNS3 or the EBNG, they will open, they will put two router on the BGP and they will show you one AS number 10, AS number 20. They will put the command router AS10, never this. Then so, and people will be on that time, there will be hesitation. What interviewer will ask? Because in the network, believe me, no one can give you a means what is that is called in the software, the project, live project. In network, that is not there. Okay, live project scenario is not there like the Java and C++. So on every topic, suppose this is the architecture. Okay, and when I will finish my architecture topic,
I think it will 3-4 weekend it will take. Okay. So what we will do, whatever in my practical experience since last 10 years, because I am in the implementing team. Okay. So what I will let you know, some means 3-4 projects, basic project. For this architecture, you just need to the basic projects. Okay. So that basic projects 3-4, I can prepare you the diagram. I can prepare you for when I will be free, I will prepare you the diagram. What is the project scope and how you need to handle with the client. Okay. Because directly you will not work in the project. Suppose there will be one switch configuration you need to do. No, you don't need to do the switch configuration directly. Because if interviewer will be in the hesitation, if he will feel that actually candidate is real or not, sometimes they will ask some kind of practical questions. Okay. So that time I will give you a clear scenario. If a project will come, because if you are not working in the network part, okay, you are working on something cable connected. So interviewer will ask what you are doing on the daily activity. And if you will tell that I am connecting the cable, so I want to grow in the network field, so I want to join. No one will take. Hello. Please ask. Anyone is asking anything? Okay. So believe me, no one will take you. So what we will do after completion of one module. Okay. And if I will feel no, I will complete this module, let me give you one means project type scenario. I will prepare a diagram for you. I will give you some snapshot what generally you are doing and some process. Suppose one switch will come to you and client will tell you, please configure this switch. No, it's not the process. Okay. There in company real environment, when you are working on a project team, there is some process. First, a project coordinator will take this project. There is some process. Then he will come to the network engineer, supposed to you. Then you need to do the study first. What is the study? And how you will do the study? High level diagram, low level diagram, how HLD is prepared, how LLD is prepared. What is the, and interviewer will ask how you configure the HLD. And you are not aware about the HLD, high level diagram. No, you need to tell, sir, we have the Visio software, Microsoft Visio, company has provided us. In the Visio, we have the stencil and we are drawing the diagram from the Visio, the complete architecture. And then we are representing in front of the client and we will ask client that this is your connectivity, this is not in the redundancy, please put redundancy. Then after we will configure the switch. Okay. These things, these are actually real practical things. Okay. I will let you know. If I will get time, then on after every topic, I will let you know. Else, I will complete one module. We will put one class only for the live project, so that you will be aware. So if anyone is not working in the core networking field, he can directly tell in front of interviewer, sir, that I am working on the network side, I am configuring the switches, I am working on the project team. If any switch is coming, I am implementing the switch. This is the process, this is the we are recommending to the client. So interviewer will believe you if you will give the answer. Believe me, he is easily believe you that people is really working and you will be selected. Right. Okay. This is the main doubt, because this doubt was mine when before 11 years I have started my career. What I need to do, how I can answer in front of the interviewer. Okay. So we'll proceed like that. Believe me, after this completion of class, we will cover 10 to 15 projects, because more than 500 projects I have worked in last 10 years. So 10 to 15 I will provide you. I have some documents. Okay. So direct documents I cannot share with you. I will prepare and I will show you. Okay. It's clear? Okay, sir. Right. Yes. Okay. So anyone, any doubt till now, please let me know. Any Sir, doubt? I have some doubts, Yes, sir. I please. without CCNA. Sir, I have been without CCNA. I can learn, sir, CCNP in core. I think someone asked this question already. Yes, sir. So I have some doubts, sir. No, I which have doubt? to Tell also me. learn Yes. CCNA. Sir. No, in CCNA, you know about the basic subnetting. What is the AD? These things, you know. Sir, Only basic thing. you give me some hints, notes, sir. Actually, I don't know. Your voice is not properly clear to me. It's only me, or everyone else is facing Give the me some. same issue.
Sir, if you give me some notes or something, then I can manage, sir. Or you can Or connect me sir. you can connect me one to one. Okay, I'll provide you the notes, no problem. Because in this class, it's Okay. CNP class, and Okay, it sir. Okay. anchor again, believe me, anchors it very basic, because 60% theoretical is there. Okay, so I will provide you in the back end. You can ping me, I will Okay. get back to Thank you. you. Okay, WhatsApp we can connect, I will guide you how to do for the CCN. But Okay, you sir. need to Thank do, you. but you need to provide some time, because I cannot read on behalf of you. You need to read. Okay, you Yes, need to sir. give Yes. time. Yes, I can just guide you, but I cannot read on behalf of you, so Sir, you need because to read. sir, I am also doing my training of CCNA. Okay, and How much it's completed? it's on routing only. No problem. No problem. It's and switching part, No, I don't know. no, it's no. Still It's no because any you can see, traffic certification. because you can see it's a layer 2. Yes. Okay. Okay, so it's not an issue. Same thing, CCNA, your tutor will tell you what is the BPDU guard, what is the root guard, what is the UTLD, what is the STP. If my STP will be failed, what is the issue? Okay, so these Yes. things will be covered. No problem, it's not about. If you are taking the CCNA, no worry. But I think someone did not take the CCNA, please connect with me. Okay, I will guide you. It will just take 3 to 4 days to clear all the CCNA topics, basic topics. Okay, you can connect with me. Okay. Okay. But hello, this Yes. is only class in English or Hindi also? अगर आप लोग कंफर्टेबल हो हिंदी के लिए, क्योंकि मुझे 3 लैंग्वेज पता है, हिंदी पता Okay. है, इंग्लिश पता है, और मेरा नेटिव लैंग्वेज ओडिशा का मैं हूँ, ओडिया पता है. Okay, sir. Good. Right. But I suggest you you can learn in means English. You benefit in future, I think. नो, आप लोग बताओ कंफर्टेबल, बिकॉज अगेन आई एम टेलिंग यू इट्स अ कंप्लीटली टेक्निकल. अगर कोई मतलब इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो तो बताइए, क्योंकि हम हिंदी में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि टेक्निकल स्किल बहुत जरूरी है. दैट्स ओके, यू कैन लर्न इंग्लिश. मिक्स सर. हाँ English जी. is basic language only, sir. But technical knowledge is Mix होना चाहिए सर. big. नहीं, वन बाय हेलो. वन, वन बाय वन. हाँ जी, हाँ बताइए. हाँ, मैं कह रहा था सर हिंदी इंग्लिश मिक्स होना चाहिए. ठीक है. हाँ. यार मिक्स है. ठीक है, कोई नहीं. वर्ड इंग्लिश में चलेगा, लेकिन प्योर इंग्लिश में थोड़ा सा निकल जाता है ऊपर से. हाँ सर इंग्लिश अगर मतलब थोड़ा मतलब हिंदी रहेगा ना तो मुझसे मिक्स रहेगा तो यार नॉलेज है ये तो कम्प्लीटली अप टू यू, ये कम्प्लीटली अप टू यू. आप लोग मुझे जैसे बोलोगे, क्योंकि 2 लैंग्वेज पता है, मतलब बट आप सर लोग समझ पाओगे हिंदी इंग्लिश, बाकी तो मुझे पता नहीं. सर इंग्लिश तो एक लैंग्वेज ओनली है और टेक्निकल हमें सीखना है. हाँ, ये मैं अगेन ये चीज हाईलाइट कर रहा हूँ. whenever you will go to a technical interview, they will not ask you to give that your group discussion round. No, nothing. क्योंकि हमें सर टेक्निकल नॉलेज रहेगा तो हम इंग्लिश में भी दे सकते हैं, कहीं भी कोई इशू नहीं होगा. नहीं, टेक्निकल और आपको बेसिक, देखो बेसिक इंग्लिश तो आना चाहिए, नहीं तो आप वो तो कैसे मतलब. हाँ आता है मुझे, हाँ इंग्लिश. वो तो सबको पता है यार, सब मतलब आज तक यहाँ पहुंच गए, मतलब सबको इंग्लिश ही पता है. ठीक है, बट ये नहीं कि आपको सपोज समवन इज वर्किंग ऑन दी सर्विस डेस्क फील्ड या बीपीओ सेंटर, भाई देखो उन लोगों के लिए इंग्लिश बहुत टफ होती है, क्योंकि एवरी टाइम उनका जो कम्युनिकेशन होती है ना, वो बाय फोन होती है. ठीक है, तो उनका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, हमारी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग नहीं होना चाहिए. हमारा जो पैसे मिलेगा ना, हमें टेक्निकल स्किल के हिसाब से मिलेगा. यू टेक्निकल शुड नॉलेज नो, होगा. यू शुड नो बेसिक इंग्लिश. ठीक है, जिससे सामने वाला, मैं आपकी बात समझ पाऊंगा, आप मेरे बात समझ पाओगे. Yes. ठीक है, क्योंकि आपको इंटरव्यूअर पूछेगा भाई वीआरएफ क्या बताओ, वो आपकी इंग्लिश चेक नहीं करेगा. अगर आप वीआरएफ उसको बता नहीं पाओगे तो कोई फायदा नहीं यार. टेक्निकल नॉट इंग्लिश. हाँ, टेक्निकली हमें वो करना पड़ेगा. ठीक है, वो आपकी जैसे, क्योंकि कोई कोई बंदे होते हैं ना, सो मतलब आउटसाइड से होते हैं, जैसे कम्प्लीटली साउथ से होते हैं, वो लोग समझ नहीं पाते हैं हिंदी. ठीक है, यस तो नाउ मुझे यही लग रहा है कि सब मतलब नॉर्थ साइड से है, सबको हिंदी कंफर्टेबल, यही है ना. यस यस. किसी को डाउट? क्योंकि सर हम बिहार से हैं सर. अरे बिहार से तो पूरा हिंदी ही चलता है भाई. सर नहीं तो मुझे, आगे की बैच हिंदी में ही होगी ना हमारी? हाँ भाई पूरा हिंदी में ही होगी, कोई सुने. मैं एक्चुअली सर मैं गुजरात से हूँ, तो गुजरात में तो गुजराती ज्यादा चलता है, गुजराती और हिंदी, इस वजह से. यार गुजराती तो मुझे आता नहीं है, नहीं नहीं हिंदी में. नहीं, हिंदी में कंफर्टेबल है हम. ठीक है, हिंदी में, बट एक मैं नाम में. मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, जिससे अभी मैं भी पहले ऐसे सोचता था कि हिंदी में हो तो
इजीली समझ में आएगा। बट आप जब किसी अच्छी कंपनी, जैसे आप किसी HCL TCS वगैरह में आप अप्लाई करते हो ना, जैसे अभी मैं बैंक ऑफ अमेरिका में क्लाइंट साइड है, ठीक है, तो वहां पे मैं ऐसे ही सोच के घुसा था कि चलो एटलीस्ट हिंदी में पढ़ लिया और वहां चले गए। बट हाँ जब हाँ अभी मैं आप जो तन्मय दोषी, आप गुजरात से हो, मैं भी वहीं से अहमदाबाद में ही रहता हूँ। सो हाँ गांधीनगर, हाँ, तो वहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका, ठीक है, तो वहाँ पे अब इंग्लिश कंपलसरी है, ठीक है। हाँ, वो तो है सर। नहीं हाँ देखो, सो किसी भी आप देखो एमएनसी में जा रहे हो, देखो हम्म। आजकल ये हो गया। सिंपली वो ये है, जैसे जैसे या मेरा क्लाइंट है। मेरा जो क्लाइंट है ना, फ्रांस का है, यूएस का है, देखो कोई हिंदी नहीं समझेगा। बहुत ये बेसिक चीज होती है। यस। बट आप लोगों को इंग्लिश ऐसा कम्युनिटी, देखो ये भी इशू होता है, अगर आप फ्रांस के साथ कभी काम किए हो, उस बंदे के साथ, उनका इंग्लिश नहीं होता है भाई, उनका उनका फ्रेंच चलती है। तो बहुत कम्युनिकेशन इशू आता है उस टाइम में। अगर आपको फ्रेंच पीपल मिल जाएगा, बिलीव मी, आई एम फेसिंग दिस इशू। ओके। तो ये है कि आपकी बेसिक इंग्लिश स्ट्रांग होना चाहिए। कम्युनिकेशन राइट ठीक राइट। है यार, स्ट्रांग होना चाहिए, इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। तो आप लोग मुझे बताओ, हिंदी चले इंग्लिश चले, क्योंकि a lot of syllabus तो I need to दोनों cover। आप मिला के मिक्स चलिए मिक्स सर, में जा, समझ में आना चाहिए। मिक्स में जाने की कोशिश। हाँ हाँ ठीक या ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई अगर जिस टॉपिक समझ में नहीं आए तो आप इसको तो, हिंदी में समझा हाँ सकते हैं। हाँ देखो, टॉपिक को या जैसे हम टॉपिक के ऊपर आएंगे ना, सपोज एक चीज यहाँ पे आ रहा हूँ। हम्म, देखो, ये हाइपरविजर, चलो ये तो थियोरेटिकल है यार, ये कुछ नहीं है, तो मैं आपको ये बताऊंगा ये चीज। बट जैसे यहाँ पे हम आ जाएंगे, जीआरई में आ जाएंगे, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जेनरिक राउट के एनकैप्सुलेशन जो होती है, आईपीसेक टनलिंग क्या होती है, जीआरई के ऊपर आईपीसेक आप जैसे डालोगे, जीआरई कितने बिट की होती है। देखो, सिर्फ आपको मैं अगेन यही चीज बोल रहा हूँ, अगर आपको मैं बता दूंगा जीआरई क्या है, आईपीसेक क्या है, आईपीसेक में सिक्योरिटी लग जाता है, आपको एक लैब करके दिखा दूंगा, नहीं नहीं चलेगा, बिलीव मी। इंटरव्यूअर आपको पहला क्वेश्चन पूछेगा कि जीआरई आईपीसेक आपको पता है, आप बोल दोगे कि यस सर मुझे पता है। पहला क्वेश्चन आएगा, जीआरई की साइज क्या होती है, पैकेट साइज। अगर कोई आज की डेट में इंटरव्यू दे रहा है नेटवर्किंग में, तो ये आप लोग, कुड यू यस प्लीज सर, प्लीज म्यूट, म्यूट म्यूट करो को भाई यार। कुड यू प्लीज म्यूट। ओके, ये देखो, तो जीआरई एंड आपको वो पूछेगा कि भाई जीआरई एंड आईपीसेक आपको पता है, यू कैन इजीली से यस आई नो। पहला क्वेश्चन वो आपको पूछेगा कि व्हाट इज द पैकेट साइज ऑफ जीआरई, व्हाट इज द पैकेट साइज ऑफ प्योर आईपीसेक। इफ आई विल पुट द आईपीसेक ओवर जीआरई, देन व्हाट विल बी विद माय पैकेट साइज। भाई आप लोग क्या बोलोगे, अगर प्रैक्टिकली आपने वर्षक में काम नहीं किए हो, ठीक है, तो ये चीज तो आपको जानना जरूरी है ना। अगर आज की डेट में कोई इंटरव्यू दे रहा है, तो दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चन, कोई आपको नहीं पूछेगा व्हाट इज जीआरई, सिंपली पूछेंगे भाई जीआरई की पैकेट साइज बताना क्या है। ठीक है। तो वो चीज में हम चलेंगे। ये किसी का नॉलेज, चलो मैं वन बाय वन अभी कवर करता हूँ। लेट मी आस्क वन थिंग, एनीवन नो अबाउट द हाइपर विजिट टाइप 1 टाइप 2 क्या होती है। नहीं सर। हाइपरवाइजर सर। यार ये तो बेसिक है, बताओ, किसी को आता तो होगा ये। वन बताओ। VMware का विस्पर है। ये क्या है, एक मिनट। कहाँ गया मेरा, ये क्या है, दिख रहा है ये। टाइप VMware, VM वर्क VMware, स्टेशन, ये हाँ वर्क स्टेशन। हाँ, ये हाइपरविजर की एक पार्ट है। हाइपरविजर जो होती है ना, मतलब वो एक्चुअली क्या होती है, टाइप 1 टाइप 2 की होती है। मतलब टाइप 1 क्या होती है, ओएस के ऊपर डायरेक्टली फिजिकल मशीन के ऊपर किसको डाला जाता है, ओएस के ऊपर किसको डाला जाता है। ठीक है। ये सब चीज हाइपरविजर के अंदर आता है। लेट मी कम टू द माय सिलेबस। ठीक है। ये हाइपरविजन मतलब डायरेक्टली फिजिकल, सपोज ये मेरा फिजिकल सर्वर है, मेरा लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप ही तो होती है यार, वो थोड़ा जीबी वीबी उनका ज्यादा होती है। ठीक है। तो डायरेक्टली हार्डवेयर के ऊपर हम क्या डाल सकते हैं, और ओएस के ऊपर हम क्या डाल सकते हैं। उसमें टाइप 1 क्या होता है, टाइप क्या होती है, वर्चुअल मशीन, वीएम हम क्यों यूज करते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन फ्रॉम वन फिजिकल सर्वर। ठीक है। तो वर्चुअल एक्सेस स्विच। करने के लिए सर, तो डाटा सेंटर को एक्सेस करने के लिए दूर से रिमोटली हम करते हैं सर उसको। आपकी आवाज सही से नहीं आ रहा है, अगेन कुड यू प्लीज टेल। वो सर उसको डाटा सेंटर को रिमोटली हम हैंडल करने के लिए लेते हैं ना सर, हाइपरवाइजर का। नहीं नहीं, डाटा सेंटर देखो डिफरेंट टेक्नोलॉजी होती है। डाटा सेंटर जो आपकी अगर नॉर्मल ट्रेडिशनल में है, थ्रू हाँ नेक्सस एनएक्स ओएस से ही आप कर लोगे सारा चीज।
अगर आप डाटा सेंटर में देखो, आप क्यों बोल रहे हो कि डाटा सेंटर में ये चल रहा है, मुझे पता लग गया, क्योंकि जो डाटा सेंटर होती है ना, वो मेनली सर्वर के लिए होती है, ठीक है, तो इसीलिए, हाँ राइट, तो इसीलिए ये लग रहा है कि हाँ, हाँ राइट, VMware जो होती है डाटा सेंटर के एनवायरनमेंट में यूज होता है, बट उसका मतलब नहीं है कि डाटा सेंटर को हैंडल करने के लिए हम VMware यूज करते हैं, नहीं। डाटा सेंटर जो होती है आपके ट्रेडिशनल डाटा सेंटर होती है, SCI डाटा सेंटर होती है, NX OS चलता है, नहीं तो SCI की चलती है। आप स्विच को आप एक्सेस करोगे एज ए नेटवर्क इंजीनियर, ना कि मैं भाई हाइपरविजर को एक्सेस करूंगा, ये भाई सर्वर टीम की काम है, हमें बस बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अच्छा। क्या होती है ये वर्चुअल स्विचिंग क्या होती है, मतलब जैसे बहुत सारे वर्चुअल मशीन है, ठीक है, उनको हम कैसे कम्युनिकेट करवाएं आपस में। तो उसके लिए अगर आप सर्वर टीम बंदी के साथ कभी काम किए हो, आपने सुना होगा ये वर्ड, वो लोग ना वर्चुअल स्विच क्रिएट करते हैं उस मशीन में। वर्चुअल स्विच के थ्रू निक की जो होती है, उनके थ्रू ये सारे जो वर्चुअल मशीन होती है वो आपस में कम्युनिकेट होता है। यहाँ पे और एक टेक्नोलॉजी नहीं है, टीमिंग। जैसे हमारा स्विच में ट्रंक होता है ना, मल्टीपल विलन पास करते हैं, तो वहां पे एक सर्वर में तो भाई मल्टीपल विलन, सपोज VM होस्टेड है आपकी, एक 210 में चल रहा है, एक 525 में चल रहा है, सो देन दैट टाइम देयर शुड बी कम्युनिकेट, ओके। सो देयर इज ए प्रोसेस कॉल्ड टीमिंग, जो हमारा यहाँ पे आप लोग ट्रंक बोलते हो। तो ये देखो सर्वर की चीजें, ये मैं बताऊंगा थियोरेटिकली, बट यू शुड नो व्हाट इज वर्चुअल मशीन, व्हाट इज वर्चुअल स्विचिंग, व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ वर्चुअल स्विचिंग, हाउ वर्चुअल machine will interconnect with each other and the outside world. So these things are under the virtualization, okay. Same thing in the VRF। VRF किसी को पता है, ये पता होना चाहिए, CCNA की पार्ट है। VRF बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। सपोज मेरा राउटिंग टेबल ग्लोबल राउटिंग टेबल नहीं है, मैं, विजुअल राउट फॉरवर्डिंग होता है ना सर, VRF। हाँ वो तो उसका फुल फॉर्म हो गया। उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होती है, हाँ ये तो देखो, हमेशा ना ये चीज, ठीक है आप एब्रिविएशन जानो, फुल फॉर्म जानो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल, ये जब घुसो आप, ठीक है, अगर आप किसी की फुल फॉर्म भूल भी जाओगे ना, इट्स ओके, इंटरवल विल नॉट आस्क, बट आपको वर्किंग प्रिंसिपल एंड ट्रबल शूट एंड व्हाट इज द इशू, ये तीन जानना है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा क्या है VRF। जैसा अगर कोई MPLS में नेटवर्क में काम किया है, तो सपोज मेरा दो सिस्टर कंपनी है, ठीक है, या बाकी कंपनी है, 10 की नेटवर्क, भाई देखो प्राइवेट में तो सबकी ट्रेन चलती है ना, ठीक है। तो नहीं तो अगर मैं एयरटेल से ले रहा हूँ, वो भी एयरटेल से ले रहा है, इशू क्या होगा दोनों में, सारा की सारा सबका नेटवर्क सबके पास आ जाएगा, हाँ या नहीं? हेलो। आ जाएगा। हाँ, तो उसके लिए हम कैसे VRF टेबल यूज होती है, ठीक है, RDRT क्या होती है MPLS में, वो सब चीज हम देखेंगे। GRE ऑलरेडी हम, मैं आपको बता दिया, GRE जो होती है टनल होती है, विदाउट सिक्योरिटी विद सिक्योरिटी, बट पैकेट कैप्चर उस टाइम ही दिखाऊंगा, सपोज टू साइड आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, थ्रू ए राउटर। यहाँ पे हम राउटर के थ्रू देखेंगे, नॉट थ्रू फायरवॉल। सो यहाँ पे हम राउटर के थ्रू देखेंगे कैसे IPsec आपकी कॉन्फ़िगर हो रहा है, कैसे GRE कॉन्फ़िगर हो रहा है, ठीक है। एंड दिस इज अ टेक्नोलॉजी VXLAN, एक्सटेंडेड VLAN, जो आपकी होती है, सपोज मेरा 2 डाटा सेंटर है, ठीक है, एक सपोज लॉस एंजल्स में है और एक आप मान लो डेलास में है, या आप इसमें है, पेरिस में है, तो उनका तो L2 नेटवर्क भी वही चल रहा है ना। तो डाटा सेंटर में जो L2 नेटवर्क कम्युनिकेट करेगा थ्रू L3 नेटवर्क, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, वो होती है VXLAN। कैसे यूज होती है मैं आपको ये थियोरेटिकली पूरा डिस्क्राइब करके बताऊंगा ये चीज। इट्स क्लियर, ठीक है, थोड़ी बहुत कुछ पता चल रहा है टेक्निकल वर्ड से, हाँ सर। ठीक है। यस सर। हाँ, नाउ दिस टॉपिक इज कवर्ड, मतलब बेसिक बेसिक बता दिया मैंने, आर्किटेक्चर क्या है, वर्चुअलाइजेशन क्या है। नाउ दिस इज द मेन टॉपिक, एंड आई एम अंडर इम्प्रेशन दैट दिस some everybody should aware about this topic, yes or no? ट्रंकिंग पता है सबको? लिटिल बिट आइडिया बोल रखा। किसी का पता है ट्रंकिंग? ट्रंकिंग तो स्विच सर स्विचिंग करना होता हाँ बोलो क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रंकिंग? है। जैसे सर अगर बाईपास करके जैसे लेते हैं सर कभी अगर कोई किसको डिवाइस बाईपास काम नहीं करके कर। लेते हैं? हाँ। किसको बाईपास करके लेते हैं? जैसे मान लीजिए सर कहीं अगर सिग्नल नहीं आ रहा तो उसको हम ऑप्टिकल फाइबर को बाईपास करके पीओयू से लेते हैं उसका नहीं, कनेक्शन। ट्रंकिंग के लिए क्या आप, कौन नो सी नो। सिग्नल ट्रंकिंग में, आई एम आस्किंग, आई एम नॉट अबाउट द एक्सेस पॉइंट। तो नहीं सर, तो वो अपना कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है।
ओके, ठीक है। किसी को क्लियर है ट्रंकिंग की कंसेप्ट? सर ट्रंकिंग में एक्चुअली जो हमारे विलेंस होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करते। राइट लाइक मुझे एक जगह से सारे विलेन एक्सेस करने हैं तो मुझे उस पोर्ट को ट्रंक बनाना पड़ेगा, राइट राइट विलेन राइट। एक्सेस हो पाएंगे, वरना नहीं हाँ, तो। गुड, राइट, यही है उसका कॉन्सेप्ट। आपको पता होना चाहिए भाई कहाँ पे मैं एक्सेस डालूंगा, कहाँ पे मैं ट्रंक डालूंगा। ठीक है, एक्सेस पोर्ट क्या होती है, ट्रंक पोर्ट क्या होती है। देखो यहाँ पे हम उस पोर्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, व्हाट इज प्रोमिस्कस पोर्ट, नो। आपको पता होना चाहिए कि ट्रंक पोर्ट क्या होती है, एक्सेस पोर्ट क्या होती है, क्या डिफरेंस होती है, कौन सी एनवायरनमेंट में एक्सेस डालूंगा, कौन से एनवायरनमेंट में ट्रंक डालूंगा। ठीक है, ट्रंक जो होती है सारे विलन को उसमें, मतलब सारा विलन मतलब उसमें भी आपका टर्म एंड कंडीशन होती है। आप जितने विलन को चाहोगे उतना को पास करोगे। इफ या यू विल इफ यू विल सिंपली राइट स्विच बट मोर ट्रंक, ठीक है, तो आपकी सारा विलन पास हो जाएगा। एंड सेम टाइम जस्ट ए प्रैक्टिकल क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू, इफ एनीवन नो। या एंड यूजर के जो पीसी होते हैं वो एक्सेस पोर्ट में होते हैं और स्विच राइट, यू आर राइट, वो ट्रंक होते हैं। राइट। एंड जब प्रैक्टिकल करोगे या कुछ चीज लिखोगे ना, थोड़ा ट्राई करना कि नोटपैड में लिखोगे ताकि कमांड के साथ आप थोड़ा एक्वेंटेड। स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा होगा, उसको थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है। ठीक है, सपोज मेरा विलन 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। हाँ, अब मुझे बताओ इस स्पोर्ट में कौन से विलन पास होगा। नेटिव विलन की बात छोड़ दो, नेटिव विलन आई थिंक सबको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, मैं बताऊंगा उस चीज को। आप मुझे बताओ इस स्पोर्ट में कौन सी विलन पास होगा, जल्दी बताओ। या बाय डिफॉल्ट तो सारे विलेन पास हो जाएंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट, हाँ राइट, बाय डिफॉल्ट, हाँ बाय डिफॉल्ट सारा पोस्ट में पास हो जाएंगे। अगर आपको देखना है कि इस स्पोर्ट में कौन सी विलन पास हो रहा है, कमांड क्या है? सो इंटरफेस ट्रंक। ठीक है, उसके बाद मुझे एक चीज बताओ यहाँ पे मैं, ठीक, एक मिनट। इस कमांड का मतलब क्या है? या ओनली अलाउ 10 नंबर विलेन। भाई यहाँ पे भी तो 10 अलाउड है ना, कोई कहाँ बंदा है? आया, यहाँ पे तो 10 अलाउड है ना, ओके। 10, 30, 20। कोई तो बंदा अभी मुझे बताया कि सारे विलन यहाँ पे पास थे, ही इज राइट, ठीक है, सब पास हो गया। तो अभी मैं था, सपोज मैं इस कॉन्फ़िगरेशन करके चला गया, मेरा शिफ्ट ओवर खत्म, सेकंड बंदा आया और एक इस स्पॉट में ये डाल दिया, तो इसका मतलब मुझे समझाएगा पाएगा कोई क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन? या हम ओवरराइट करेंगे कॉन्फ़िगरेशन तो जो है गिग 1/1/1 पोर्ट है उसमें सिर्फ 10 नंबर का ही विलेन अलाउ होगा, बाकी के जो विलेन है वो अलाउ नहीं रहेंगे उसके बाद। बस मैं वही बताना चाहता था, इन रियल एनवायरमेंट कभी ये चीज गलती से भी नहीं करना, नहीं तो अच्छा खासा पेनल्टी लगेगा, ठीक है। कभी भी ये नहीं करना। अगर आप कुछ नया विलन का सपोज, ये चलो नया विलन था 50, भाई सारा रिमूव हो जाएगा, सिर्फ यही रह जाएगा, खत्म हो जाएगा पूरा कहानी, ठीक है ना। लंबी चौड़ी पेनल्टी लगेगा। डोंट डू एनीथिंग दिस ऑन द रियल एनवायरमेंट, प्लीज पुट द कमांड ऐड। उसके बाद अगर आप 50 करोगे, उसका मतलब क्या होती है, मेरा ये सारा रहेगा प्लस ये चलेगा 50। तो रियल एनवायरमेंट में जब भी काम करोगे, सब बी केयरफुल, पुट द लाइन ऐड, नहीं तो पूरा का पूरा आपकी सारा विलन हट जाएगा, पूरा नेटवर्क खत्म हो जाएगा एक साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ, ये रियल एनवायरमेंट में बिल्कुल ये गलती मत करना, डायरेक्टली मत पुट करना, खत्म हो जाएगा सब, ठीक है। ये हो गया आपकी ट्रंकिंग प्रोटोकॉल क्या होती है, डॉट वन क्यू क्या होती है, आईएसएल क्या होती है, कौन किसका स्टैंडर्ड होता है, आईएसएल में पैकेट साइज क्या होती है, डॉट वन क्यू में पैकेट साइज क्या होती है, ठीक है। वो चीज हम देखेंगे। और ये दोनों आती, ईथर चैनल में ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है, प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा। सो ईथर चैनल समरी में पी क्या होती है, डी क्या होती है, आई क्या होती है, ठीक है, ये सब पूछते हैं। उसके बाद आरएसटीपी एमएसटी आई थिंक ये सबको पता है, बट अगेन मैं बताऊंगा एसटीपी की एक प्रोसेस। एसटीपी जो होती है सिस्को स्विच में बाय डिफॉल्ट चलती है, सबको पता होगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट चलती है, बट नॉलेज शुड बी मैंडेटरी, क्योंकि अगर आपकी एसटीपी की इश्यू फंस गया ना,
तो आप वहीं पे अटक जाओगे अगर आपकी एसटीपी की क्लियर नहीं होगी। ठीक है, अगर सपोज एक विलन दोनों स्विच में रूट बन जाएगा, ये प्रैक्टिकल सीन में ना बहुत बार होती है, एक विलन बन गया दोनों में रूट, खत्म, वो विलन का सारा काम बंद हो जाएगा। उस किसको कैसे ओवरकम करेंगे वो मैं बताऊंगा। आरएसटीपी क्या होती है, रैपिड स्पैनिंग ट्री, मल्टी स्पैनिंग ट्री, ये सब चीज क्या होती है, बीपीडीयू गार्ड क्या होती है, बीपीडीयू फिल्टर क्या होती है, कौन सी पोर्ट में बीपीडीयू फिल्टर यूज करते हैं, एंड यूजर में यूज करते हैं या कौन सी पोर्ट में यूज करते हैं, ये सब चीज हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये अगेन इतना ही चीज है एंकर में। अगेन ये सॉरी वो है EIGRP OSPF, ये भी ये सारा चीजें आपकी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग स्टेट प्रोटोकॉल क्या होती है, उसके बाद लोड बैलेंसिंग क्या होती है, मतलब EIGRP बाय डिफॉल्ट क्या करती है, EIGRP थोड़ा सा OSPF से डिफरेंट क्यों है, एंड OSPF EIGRP से क्यों डिफरेंट है, एंड प्रैक्टिकल सीन में क्या होती है। ठीक है, एरिया टाइप आपको जैसे पता होगा, LSA 1, LSA 2, LSA 3, LSA 6। एक चीज मैं बता रहा हूँ, LSA 6 जो होती है ना, ये जनरली हमारा एंटरप्राइज में यूज नहीं हो रहा है, बट आजकल की 2-3 बार मैं खुद फेस किया, जैसे लास्ट टाइम मैं इंटरव्यू दे रहा था, दे आर आस्किंग व्हाट इज LS। कहा था भाई इतने दिन। सो लास्ट टाइम जैसे मैं दे रहा था ना इंटरव्यू, तो समवन इज आस्किंग व्हाट इज LSA 6, एंड यू नो इट इज नॉट यूज्ड ऑन द एंटरप्राइज नेटवर्क, एंड दे आर आस्किंग व्हाट इज LSA 6, व्हाट इज LSA 9, व्हाट इज LSA 10। हमारा एंटरप्राइज में जो है LSA 1, LSA 2, LSA 3, LSA 4, LSA 5, LSA 7 है। 6, 9, 10 हम यूज नहीं करते, बट दे आर आस्किंग व्हाट इज LSA 6, क्योंकि बंदा को पता नहीं होगा। तो ये चीज हम थोड़ा देखेंगे, पूरा जानने की जरूरत नहीं है LSA 6, 9, 10, बट थोड़ा बेसिक नॉलेज मैं बताऊंगा, वो लेके जाना। यू नेवर नो इंटरव्यूअर क्या पूछ लेगा आपको वहां पे। ठीक है, तो पॉलिसी बेस्ड राउटिंग क्या होती है, मतलब इस प्रोटोकॉल को लिए मैं इसको अप्लाई करूंगा, इस प्रोटोकॉल के लिए टेलनेट के लिए ये अप्लाई करूंगा, वो पॉलिसी बेस्ड के अंदर आ जाएगा। एंड बीजीपी, बीजीपी थोड़ी बहुत किसको पता है, बताओ, किसी को आइडिया, या मैं प्रोसीड करूं। आप प्रोसीड करो सर। ठीक है, बीजीपी जो होती है ना, डिफरेंट ऑटोनमस सिस्टम को आप आपस में कम्युनिकेट करने के लिए बीजीपी यूज करते हैं। ठीक है, सपोज 10 में है, 20 में है, तो दोनों को कैसे कम्युनिकेट करेंगे बीजीपी के थ्रू, ई बीजीपी क्या होती है, IBGP क्या होती है। ठीक है, ये सब चीज देखेंगे। इसका जो मेन चीज है ना, सारा क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा, ये जो इतनी सी वर्ड है, बेस्ट पाथ सिलेक्शन एल्गोरिथम, ये सब आ जाएगा, क्योंकि बीजीपी जो है ना, वो मेन चीज है, आपकी जो फ्लेवर होती है ना, वो रूट मैनिपुलेशन की होती है। भाई उसके पास इतना एट्रीब्यूट्स है रूट को खेलने के लिए, कि मैं इस रूट को इस साइड से लाऊंगा, उस रूट को इस साइड से लाऊंगा। दैट इज वाई वी आर यूजिंग द बीजीपी, द फ्लेवर ऑफ बीजीपी। रीजन क्या है, क्योंकि एट्रीब्यूट्स के साथ मैं बहुत खेल खेल पाऊंगा, जो कि IGRP एंड OSPF के साथ उतना है नहीं। ठीक है, दिस इज द मेन सीनो इन द बीजीपी। ओके, तो उसके बाद वायरलेस की हम कॉन्फ़िगर करेंगे। अगेन इट्स अ कम्प्लीटली थियोरेटिकल टॉपिक, बट मैं क्या करूंगा आपको, क्योंकि एज मैं वायरलेस में काम करता हूँ, सारा चीज मेरे पास है, मैं आपके लिए डॉक्यूमेंट्स बना के वहां पर स्निप के थ्रू आपके साथ शेयर करूंगा। डायरेक्टली आई कैन नॉट शेयर द डॉक्यूमेंट, स्निप तैयार करूंगा। एंड क्या इशू आता है वायरलेस में, एपी की, जैसे एपी मोड, मैं सिर्फ आपको बता दूंगा व्हाट इज एपी, एपी मोड, एंटीना टाइप्स क्या होती है, 2.5 क्या होती है, 2.4 सॉरी 2.4 क्या होती है, 6 क्या होती है, 5 क्या होती है गीगाहर्ट्ज। तो उस टाइम आपको देखना पड़ेगा भाई, एपी मोड जो होती है, सपोज जनरली एपी मोड 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, आप एक लोकल मोड हो जाती है, आप फ्लेक्स कनेक्ट मोड हो जाती है। मैं आपको बता दूंगा कि नहीं, फ्लेक्स कनेक्ट में ट्रंक डालना पड़ेगा, नहीं, इंटरव्यूअर आपको पूछेगा फ्लेक्स कनेक्ट मोड एंड लोकल कनेक्ट मोड में ट्रैफिक फ्लो मुझे समझाओ, क्योंकि आजकल सबका यही सीन हो गया इंटरव्यू का, मुझे ट्रैफिक फ्लो समझाओ। ठीक है, तो वो चीज आपको मैं कंप्लीटली डायग्राम करके लेके आऊंगा, एंड जीयूआई में कैसे एपी को हम ऑनबोर्ड करते हैं, सॉरी WLC को ऑनबोर्ड करते हैं, एपी कैसे जाएगा WLC के पास, क्योंकि सपोज आपके एनवायरमेंट में 5 WLC है एंड 100 एक्सेस पॉइंट है। भाई एक्सेस पॉइंट को क्या पता है मैं कौन सा WLC के पास जाऊंगा, उसको तो ढूंढना पड़ेगा ना। जैसे आपको पता है कि मेरा घर किस रास्ते में जाऊंगा, तो एपी को भी पता होना चाहिए कैसे मैं जाऊंगा उस WLC के साथ। फॉर दैट वी आर यूजिंग द ऑप्शन 43, दैट टाइम मैं आपको बताऊंगा। अगर एपी जा नहीं पाएगा उस WLC के पास, इंटरव्यूअर पूछेगा तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, तो आपको मैनुअली क्या करना होगा, मैनुअली हम लोग क्या कमांड डालते हैं, वो चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा उस टाइम। ठीक है, ये लेयर 2 रमिंग क्या होती है, लेयर 3 रमिंग क्या होती है, मतलब रमिंग का मेन मतलब ये मान लो, सपोज आपकी एनवायरमेंट में 2 WLC है और 50-50 एपी इधर उधर कनेक्टेड है। ठीक है, और मैं लैपटॉप लेके घूम के काम कर रहा हूँ, जो कि जनरली कोई नहीं करता है, बट क्लाइंट का ये सीन होता है, हम पैसे दे रहे हैं मतलब हम कोई इशू नहीं झेलेंगे। तो मैं बताऊँ, क्लाइंट बोलेगा मैं लैपटॉप घूम घूम के काम करूंगा, मैं बैठ के काम नहीं करूंगा।
ठीक है, तो दैट टाइम देयर इज ए चांस ऑफ रोमिंग, क्योंकि आपकी इस डब्ल्यूएलसी से उस डब्ल्यूएलसी की पॉलिसी अलग हो जाती है। तो जैसे क्लाइंट मूव करेगा ना, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वो डाउन हो जाएगा। क्या होती है रोमिंग, और हम उसको वर्क अराउंड क्या देते हैं क्लाइंट को। ठीक है, कोई घूम के काम नहीं करता है, सबको पता है, बट स्टिल दे विल हाईलाइट। ठीक है, तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, एंड ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता दिया, जीयूआई से हम कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, वो चीज मैं आपको शेयर करूंगा सारा चीज। एंड ग्रुप्स क्या होती है, प्रोफाइल क्या होती है, टैग्स क्या होती है, पॉलिसी टैग्स क्या होती है, पॉलिसी कैसे क्रिएट किया जाता है, कॉन्फ़िगरेशन में के जाके फ्लैग्स होती है, पॉलिसी होती है, टैग्स होती है, एंड साइड टैग्स, ये चारों चीज होती है। यहाँ पे नहीं है कंप्लीटली, टैग्स के अंदर दो आती है, टैग्स एंड साइड टैग्स। आरएफ टैग्स कैसे क्रिएट करना है, ये सब चीज मैं बताऊंगा आपको डायग्राम। ठीक है, टिल नाउ कुछ कुछ आइडिया हुआ, मतलब टेक्निकल वर्ड का वायरलेस में क्या होता है क्या नहीं होता है, राइट, थोड़ा बहुत। सबको सबको। हाँ सर, अभी आ रहा सर। हाँ ठीक है, जब प्रैक्टिकली करेंगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा चीजें। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा उस टाइम में, मतलब प्रैक्टिकली, क्योंकि वायरलेस थोड़ा बताना पड़ेगा, क्योंकि आजकल पूछ रहे हैं कि सपोज मेरा एक क्लाइंट कनेक्ट नहीं हो रहा है पास वाला एक्सेस पॉइंट से, बट दूर वाला एक्सेस पॉइंट में ये कनेक्ट है, तो आपको क्या करोगे। आपको यहाँ पे एक टेक्निकली वर्ड लिख दिया पावर में, भाई इसका क्या काम है, इशू कैसे आता है इसके लिए, इसके लिए सिग्नल टू नॉइज रेशियो में क्या आता है, इंटरफेरेंस क्या होती है, इंटरफेरेंस का इशू बताओ, इस टाइप की पूछेंगे। ठीक है, नॉइज का इशू बताओ, अनवांटेड सिग्नल मुझे क्यों चाहिए। तो ये सब चीज ना प्रैक्टिकली हम करेंगे, मतलब एक्चुअली क्या पूछते हैं, क्या इसको ओवरकम करते हैं, सारा चीज मैं बताऊंगा। उसके बाद ये तो सबको पता होगा आई थिंक, एनटीपी, किसी को आइडिया, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, टाइम जिससे लेता है। ठीक है, ये एक्चुअली टाइमिंग प्रोटोकॉल होती है, क्योंकि देखो मेरे पास 1000 राउटर में, 1000 राउटर में या 1000 स्विच में घुस के जाके मैं 1000 राउटर एंड 1000 स्विच में जाकर टाइम नहीं डालूंगा, क्लॉक नहीं डालूंगा। मेरा एनटीपी सर्वर होती है, एनटीपी सर्वर सपोज मेरा पेरिस में हस्टेड है, मैं इंडिया में हूँ, तो एनटीपी की आईपी डालूंगा, एनटीपी सर्वर की आईपी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, दो तीन लाइन की कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो बैकअप एक डालूंगा, मेन एक डालूंगा, खत्म, वो अपने आप सिंक करेगा वहां से। ठीक है, पैट भी उसी टाइप की होती है। तो उसके बाद ये मैं आपको ऑलरेडी बता दिया, HSRP VRRP ये कॉन्फ़िगर करेंगे, एंड HSRP VRRP में सेम टाइम एक IPSLA की चीज होती है। SLA यहाँ पे देख रहे हो, IPSLA। ठीक है, मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करूंगा भाई HSRP में IPSLA कैसे होगा। सपोज आपके आउटसाइड नेटवर्क फेल हो गया, एक लिंक फेल हो गया, भाई मेरा इनर टीम को कैसे पता चलेगा, मेरा क्लाइंट को कैसे पता चलेगा, वो तो ट्रैफिक भेजते ही रहेंगे ना। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जिटर कैसे अप्लाई करते हैं, वो चीज होती है। एंड ये पीम की ये एक मल्टीकास्टिंग टेक्नोलॉजी होती है, डेंस मोड होती है, स्पार्स मोड होती है, स्पार्स डेंस मोड होती है। ठीक है, ये चीज मैं बताऊंगा उस टाइम, ये मल्टीकास्टिंग की होती है। जैसे मल्टीकास्टिंग की रेंज क्या होती है, क्लास ए की आईपी एड्रेस किसी को पता है। हेलो। हाँ सर। हाँ हाँ, हाँ, क्या है। 10.0.0। 12126 क्लास की सर वो। और बी की बी है सर 127 टू 192। 128 से 191 तक की है। 191, एंड सी, और 192 से 223 तक। एंड डी। 224 से 240। नो, 2 से 239 क्या होती है, वो डी जो एक्चुअली होती है वो क्या होती है, वही होती है मल्टीकास्टिंग। मल्टीकास्टिंग होती है। ठीक है, आपको अगर रीप की मल्टीकास्टिंग आपको पता होगा, ये EIGRP की पता होगा, तो ठीक है, हाँ हाँ। मल्टीकास्टिंग उसके अंदर आती है पिम। उस सेगमेंट को हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे, स्पार्स मोड के थ्रू, डेंस के थ्रू, स्पार्स डेंस के थ्रू। क्या होता है स्पार्स डेंस, यहाँ पे क्लियर नहीं है, सारा चीज मेंशन नहीं है, ओनली पिम है, मैं आपको बताऊंगा उस चीज। ठीक है, ओके नो वरी सर। अबाउट दैट पार्ट। उसके बाद डायग्नोसिस क्या करना है, SNMP हमारा कैसे काम करता है, डीबॉक्स कैसे, कोई डीबॉक्स चलाया राउटर में, डिबग, कोई एरर, ट्रे हम्म, एरर, क्या। एरर बोल रहे सर, डिबग मींस एरर ही ना। हाँ, वो कैसे, मतलब राउटर में इसको कैसे चलाओगे। नो आइडिया। हाँ, डिबग चलती है, बट रियल में मत करना, मतलब बहुत जल्दी देता है, तो यूएल कर देना, अनडिबगल करना अगर डिबग भी चला रहे हो। ठीक है, उसके बाद ट्रेस रूट किसी को पता है क्या होती है ट्रेस रूट। हम्म।
ट्रेस रूट देखो जो होती है ना, पाथ सिलेक्शन होती है, मतलब सॉरी, पाथ कैसे जा रहा है, मतलब ट्रेस रूट 8.8 को करूंगा, कितने पाथ के थ्रू वो जाएगा वो बताएगा आपकी नेटवर्क में। बट इफ यू विल गेट एनी फायरवॉल इन बिटवीन देयर, देन इट विल बी ए स्टार मार्क। ठीक है, ये ट्रेस रूट कहती है। जैसे मैं बताऊंगा ट्रेस रूट क्यों यूज करते हैं। जैसे हम फंसते हैं ना कि भाई ये नेटवर्क मेरा पिंग नहीं हो रहा है, तो मैं तो जाके भाई, इतनी बड़ी नेटवर्क है हमारा, ठीक है, आपकी नेटवर्क यूएस में है, फ्रांस में है, दुबई में है, भाई थोड़ी घूम घूम के मैं चेक करूंगा। ट्रेस रूट से मैं उसको दूंगा कहाँ पे वो अटक गया, उस बिफोर आईपी को मैं ढूंढूंगा जहां के कि इस आईपी कौन सी डिवाइस में पड़ी है, उस डिवाइस में जाकर ट्रबल शूट करूंगा। बेस्ट सिनारियो होती है ट्रेस रूट की। ठीक है, कैसे हम ट्रबल शूट करते हैं थ्रू ट्रेस रूट, वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद ये फ्लेक्सिबल नेट फ्लो क्या होती है बताऊंगा। उसके बाद स्पान और स्पान जो मिररिंग इमेज के लिए होती है, जनरली ये बताऊंगा। आईपीएसएल जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट होती है, एचएसआरपी के थ्रू मैं उसको इंप्लीमेंट करूंगा। ठीक है, एंड डीएनए सेंटर जो होती है आपकी वहां पे, एसडीएक्सेस में डीएनए सेंटर होती है, डीनैक में कैसे लाना है चीज को। ठीक है, इसके बाद ये जो ट्रिपल है, ये एक सिक्योरिटी की पार्ट हो गया। आप अगर टैकेक्स रेडियस कुछ कॉन्फ़िगर करना चाहते हो ना, द वेरी बेसिक कमांड फास्ट मॉडल यू शुड टू एनेबल द ट्रिपल ए authentication, authorization, accountability you need to implement through a triple A new model command. ठीक है, so that it will be the fast command. After that आपको टैकेक्स की आईपी डालना पड़ेगा, सर्वर की आईपी, रेडियस सर्वर की आईपी डालना पड़ेगा। टैकेक्स के लिए टैकेक्स लोकल कैसे होगा, लाइन ऑथेंटिकेशन कैसे होगा, वो मैं आपको पूरा पूरा कमांड दूंगा। ठीक है, कॉन्फ़िगर करके वो दिखाऊंगा। एससीएल सीसीएनए की पार्ट है, वो भी हम देखेंगे। सपोज आप इस आईपी को या इस सबनेट को उसके साथ कम्युनिकेट नहीं करने दूंगा मैं, क्या करना है, कैसे एचसीएल सेम टाइप कूप है, क्या प्रोटोकॉल होती है ये। उसके बाद एक चीज होती है डॉट वन एक्स, ये सारा ऑथेंटिकेशन की काम हो गया। ठीक है, डॉट वन एक्स जो ऑथेंटिकेशन होती है ना, ये यूजर लेवल की ऑथेंटिकेशन होती है। ठीक है, किसी को पता है डॉट वन एक्स के बारे में? ये जो ऑथेंटिकेशन होती है डॉट वन एक्स यूजर के लिए होती है। पीएसके किसी को आइडिया ये? नो सर। आपने एक चीज मुझे बताओ, आपने अभी लैपटॉप कनेक्ट किया वायरलेस के साथ, तो आपने कैसे कुछ पासवर्ड डाला या नहीं डाला? पासवर्ड डाला डॉट वन WPS आता के। है उसमें शो करता है, क्या? डॉट वन एक्स उसमें शो करता है, पासवर्ड डालते हैं ना। नहीं नहीं, डॉट वन एक्स में पासवर्ड नहीं डालते। डॉट वन एक्स आईपी वो ऑटोमेटिक, डॉट वन एक्स ऑटो कनेक्ट होगा सबनेट के थ्रू, हम आइस के साथ उसको इंप्लीमेंट करेंगे। और जब पीएसके होती है ना, आप लोग जैसे एक चीज मुझे बताओ, वायरलेस में आप जैसे अपने एसएसआईडी से कनेक्ट हुए, आपने कुछ पासवर्ड डाला, चलो उसके बाद ऑटो कनेक्ट करके रख लिया, फर्स्ट टाइम आपने पासवर्ड डाला या नहीं डाला? डाला हाँ। हाँ, वो ये क्या सर होती है? ऑथेंटिकेशन के लिए यूज किया जाता है ना। हाँ, ऑथेंटिकेशन नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ। पीएसके जो होती है ना, प्रीसेट की होती है। ओके। ठीक है, जो आप की डालते हो ना, वो प्रीसेट की होती है। यस यस। ऑथेंटिकेशन में जो होती है डॉट वन एक्स भी होती है, UABOT भी होती है, EFL भी होती है, फॉरवर्ड हैंडशेक कैसे होती है, मतलब एपी एंड क्लाइंट के बीच कम्युनिकेशन की होती है। आपने 3-वे हैंडशेक की नाम सुना होगा टीसीपी आईपी में, ये फॉरवर्ड हैंडशेक होती है इन बिटवीन एपी एंड क्लाइंट। ठीक है, पीएसके जो होती है प्री शेयर्ड की होती है। ठीक है, ये सब चीज होती है। एंड पीएसके में सबसे बड़ी इशू जो होती है ना WLC के साथ, भाई जो आपकी पुरानी पुरानी फोन, इंडस्ट्रियल फोन, आपको किसी को पता होगा तो 6000 की बहुत पुरानी फोन चलती है। ठीक है, वो सिर्फ पीएसके में नहीं चलेगा, नया फोन आपकी चल जाएगा, पुराना नहीं चलेगा। उसके लिए और एक टेक्नोलॉजी आता है, फास्ट ट्रांजिशन। एफटी में दिखाऊंगा WLC में कहाँ पे उसको इंप्लीमेंट करना होता है। फास्ट ट्रांजिशन इंप्लीमेंट करेंगे तभी चलेगा पुराना फोन, नहीं तो खत्म। वो इशू मेरे साथ बहुत बार हुआ है, तो एफटी इनेबल करना होता है, वो दिखाऊंगा मैं। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा सा बेसिक चीज है, एनजीए नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। देखो ये फायरवॉल की क्लास नहीं है तो कंप्लीटली हम तो फायरवॉल में नहीं जाएंगे, बट नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का क्या काम होती है, मैक सिक्योरिटी कैसे होती है, मैक बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ये जो मैव होती है ये किसके लिए होती है? ठीक है, जैसे प्रिंटर में, मेरे सेगमेंट में प्रिंटर है, मेरे नेटवर्क में, मैं प्रिंटर को भी ऑथेंटिकेशन डालूंगा, उसके लिए कौन सी ऑथेंटिकेशन काम करेगा? मैक बेस्ड ऑथेंटिकेशन। ठीक है, और मैकबेस्ट ऑथेंटिकेशन को कमांड देखने के लिए इस टाइप की पूछेंगे, भाई कमांड क्या होती है ऑथेंटिकेशन, मेरा स्विच में चल रहा है तो सो ऑथेंटिकेशन सेशन बनना है। और वहां पे कोई आपको पूछेगा कि भाई मेरा डोमेन में अननोन आ रहा है, क्या करना है, मतलब ये रियल लाइफ एग्जांपल है, डोमेन में अननोन आ रहा है तो क्या करना, मैं बताऊंगा आपको, स्निप लेके आऊंगा। एक्चुअली मैप का इशू जैसे आता है ना, डोमेन में क्या लिख के आता है और आपको पता कैसे चलेगा कि नहीं ये मेरा ऑथेंटिकेशन हुआ ही नहीं, इसका स्निप लेके आऊंगा, सारा चीज उसको दिखाऊंगा आपको। ठीक है, क्योंकि ये डिस्क्राइब है तो, बट आपको देखना है चीजें प्रैक्टिकल में कैसे होता है, तो आई विल क्रिएट अ डायग्राम एंड आई विल लेट यू नो। ओके, इतना तक सबको क्लियर हो गया? बेसिक बेसिक, मतलब थोड़ी बहुत कुछ। यस।
ठीक है। उसके बाद ऑटोमेशन, आजकल तो ऑटोमेशन की मतलब दुनिया ही बन रहा है, ऑटोमेशन में सारा चीज ऑटोमेशन में चाहिए, क्योंकि आपका ये भी हो गया कि भाई स्विच स्पॉट में सारा नहीं देखूंगा, ऑटोमेशन के थ्रू हमें निकाल के दो कौन सा अप है कौन सा डाउन है, तो जेसन के थ्रू हम देखेंगे। ये दोनों ही है, प्रैक्टिकली हम देखेंगे, बाकी थियोरेटिकली यंग यंग यूज करके ये थोड़ा देखेंगे। डीएनएस सेंटर में भी वो यूज हो रहा है आपको, एपिक के लिए जो में एससीआई वाला एपिक के में भी यूज हो रहा है। एंड ईएम, आपको अगर ये चीज पता होगा ना, अपलेट में दिखाऊंगा, राउटर में भी ऑटोमेटिकली हम करा सकते हैं उसको, जैसे सारे कमांड अपने आप, कोई अगर उसको उस कमांड को एग्जीक्यूट करेगा ना, उसके लिए सारा राइट होके आ जाएगा। ये मैं आपको राउटर लेवल में भी करके दिखा दूंगा। सपोज मैं इंटरफेस को डाउन करके जाऊंगा ना, सारा लिखा आ जाएगा, दिस इज ये पर्पस, दिस इज ये पर्पस, दिस इज ये पर्पस, ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होगा। ये राउटर लेवल में भी हम कर सकते हैं विदाउट ऑटोमेशन के थ्रू। ठीक है, ये चीज भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये होती है आपकी एनकोर की, ठीक है, जो कि बेसिक है, एंड दिस इज मैंडेटरी आपको करना अगर आपको एंटरप्राइज फील्ड में या वायरलेस फील्ड में, एसडीएन किसी में भी, ठीक है, एंट्री करना है। यू शुड नो अबाउट द एंकर, यू शुड नो अबाउट द बेसिक राउटिंग, स्विचिंग, वायरलेस, वर्चुअलाइजेशन, दिस थिंग्स यू नो। ओके, ये मैंडेटरी चीज होती है। बट यहाँ पे 60-40 होती है कि 60 प्रैक्टिकल नॉलेज थियोरेटिकल होती है, 40 प्रैक्टिकल होती है। ठीक है, ये सबको क्लियर है? यस सर। हाँ। अब जो नेक्स्ट पार्ट होती है ना, एनआरसी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जिसे एनकोर, तो ठीक है एनकोर तो आपको 100% आना चाहिए, उसके बिना कुछ काम ही नहीं होगा। बट कोई अगर सोचेगा कि चलो यार एनकोर कर लेता हूँ, ठीक है फिर देखते हैं, ठीक है, तो इट्स ओके, वो आपके ऊपर है। बट एनआरसी क्या होती है कि जो एडवांस राउटिंग होती है ना, सारा की सारा, मैं वहां पे तो आपको बता दूंगा, देखो वीआरएफ क्या होती है, बट यहाँ पे आ गया वीआरएफ लाइट। वहां पे आपको मैं क्या लिखा था, वहां पे डिफरेंस बिटवीन ईआईजीआरपी और ओएसपी, बट यहाँ पे क्या आएगा, नेम्ड मोड ईआईजीआरपी क्या होती है, सारा ईजीआरपी एक साथ चलती है। यहाँ पे वो चीज कुछ नहीं था, आरडी क्या, जो चीज मैं आपको बताया था वहां पे कि आरडी क्या होती है, एफडी क्या होती है, ईआईजीआरपी के अंडर, एफसी क्या होती है, सक्सेसर, फिजिबल सक्सेसर, व्हाट इज द फिजिबिलिटी कंडीशन, व्हाट इज द एसआई है, वेरी कॉमन क्वेश्चन। स्टक इन एक्टिव, स्टब के लिए क्या यूज करेंगे, उसके पीछे मेरा और ईआईजीआरपी नहीं है भाई, उससे को मैं क्यों दूं मेरा ईआईजीआरपी की एडवर्टाइजमेंट सारा, तो उस केस में क्यों करेंगे, तो स्टब की। ये सारा देखो यहाँ पे, अगर वहाँ के सिलेबस एंड यहाँ की जो ब्लूप्रिंट सिलेबस है ना, अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। वहां पे था डिस्क्राइब डिस्क्राइब डिस्क्राइब, यहाँ पे ट्रबल शूट ट्रबल शूट ट्रबल शूट, कॉन्फ़िगर ट्रबल शूट कॉन्फ़िगर। ठीक है, तो ये जो होती है ना, ये 100%, यहाँ पे थियोरी तो देखो आपको जानना है, विदाउट थियोरी आपको कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो सीन होती है, यहाँ पे कंप्लीटली ट्रबल शूट, मतलब यहाँ पे कंप्लीटली आपको प्रैक्टिकल बेस्ड, वहां पे भी तो मैं आपको बता दूंगा सारा चीज देखे, बट वहां पे उतना चीज नहीं है जितना एनआरसी में एडवांस राउटिंग में है। देखो वहां पे वीपीएन में क्या था, अगर आपको याद है, सिर्फ आपको जीआरई था, एमजीआरई था नहीं था, एमजीआरई नहीं था उसका मतलब एनएचआरपी नहीं है, नेक्स्ट अप रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, नेक्स्ट अप रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल फाइंड कैसे करेगा, ये सारा यहाँ पे है। डायनामिक नेबर, सपोज मेरा 100 नेबर कनेक्टेड है, मैं थोड़ी जाके एक एक दूंगा, तो डायनामिक नेबर कैसा आईपी मिलेगा, थ्रू द आईपी सेट, तो वो चीज मैं दूंगा। स्पॉक टू स्पॉक क्या होती है, हॉप टू स्पॉक क्या होती है, हॉप टू हॉप क्या होती है, ये सब चीज। एंड आपको मैं बताया था जो ट्रिपल है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, अकाउंटेबिलिटी, ये सारा है। टैकक्स का कैसे करना है, लोकल रेडियस का कैसे करना है, तो ये सारा चीज डीएससीपी सारा यहाँ पे ही आएगा। EIGRP, बीजीपी, ओएसपीएफ सारे की, ये देखो ओएसपीएफ की वर्चुअल लिंक वहां पे नहीं था, आ गया यहाँ पे। एबीआर क्या है, एसबीआर क्या है, बैकबोन राउटर क्या होती है, ट्रांजिट क्या होती है, जो आपको मैं बताया था ना उस टाइम, एरिया देखो LSS 7 जो बताया था, ये यहाँ पे होती है। ठीक है ना, तो ये ऑल्सो मैंडेटरी है कि ताकि आपको कंप्लीटली कोई, पहले क्योंकि देखो जो फास्ट होती है ना राउटिंग स्विचिंग, पहले जमाने की तो राउटिंग स्विचिंग था, अब तो एंटरप्राइज हो गया। तो ये है आपको एनकोर एंड एनआरसी, एनआरसी हो जाएगा तो आप दैट टाइम 100% फिट, क्योंकि एनकोर से आपकी सबको थोड़ी थोड़ी नॉलेज आ गया। वायरलेस जैसे SD-WAN है, थोड़ा मैं ज्यादा ही बता दूंगा, वायरलेस वायरलेस पार्ट में रोज के डे बेसिस में काम करता हूँ, आपको कुछ दे दूंगा तो आप खुद देख लोगे, ये प्रैक्टिकल सिनेरियो में ये होता है, इजीली दे दोगे। और यहाँ पे सारा हम, यहाँ पे तो है ही नहीं कुछ थियोरी, सब हम लैब के थ्रू ट्रबल शूट सिनेरियो, जो कि तुम्हारा इंटरव्यू बेस्ड होती है, इंटरव्यू बेस्ड होती है, ट्रबल शूट की क्वेश्चन, ठीक है, वो सारा चीज यहाँ पे, क्योंकि ये कंप्लीट राउटिंग पार्ट है, सॉरी, ठीक है, ये सारा चीज तुम्हारा एनआरसी में कवर होगा। सो सो फार सो गुड। बताओ यार।
हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यस सर, यस ऑडिबल। सर, यस सर। हाँ, अब बताओ कि मतलब क्या है, क्योंकि दोनों की दोनों सिलेबस की मैं बता दिया, ठीक है। तो इनको क्या डाउट है, अभी कितना समझ में आया मुझे बताओ, मतलब समझ में तो नहीं आएगा, आई नो, बट थोड़ी बहुत तो टेक्निकल वर्ड जैसे वायरलेस हाँ की मैं सर, वो तो बताया। सर है। पूरा तो कर वो सकते नहीं हो हैं गया सर। ना, पूरा तो ब्लैंक नहीं हो गया ना, पूरा तो बाउंस नहीं नहीं सर, हो नहीं। गया ना। नहीं सर, इतना है कि कर सकते हैं सर, थोड़ा बहुत अगर हेल्प होगा तो कर सकते हैं। नहीं, दोबारा बताओ, क्लियर नहीं हुआ मुझे। कर सकते हैं सर, इसको इजी से कर सकते हैं, बस थोड़ा बहुत हेल्प चाहिए एक्स्ट्रा। हाँ देखो, हेल्प के लिए जो है ना, जैसे सारा चीज की तो देखो आपको वो नहीं होता है, ठीक है। हाँ। मतलब जैसे प्रोजेक्ट के थ्रू बताना, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो जैसे मेरा एंकर खत्म होगा, एटलीस्ट हाँ। 15 to 20 लाइव सिनेरियो की प्रोजेक्ट दूंगा। नॉट ओनली प्रोजेक्ट मींस क्या होती है कि आपको हाँ। डे वन से आपको हम्म। क्लाइंट के पास खुद जाना है या आपकी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर जाएगा। क्योंकि पता नहीं यार, किसी को आपको ऊपर डाउट आ गया ना कि नहीं ये काम नहीं कर रहा है, तो वो कुछ भी पूछ हाँ। सकता है उस टाइम। तो आप बोलोगे कि नहीं, मैं क्लाइंट से सीधा फोन में बात कर लिया और प्रोजेक्ट ले लिया। नो, दिस इज नॉट हाँ। पॉसिबल, ठीक है। अच्छा। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर कैसे जाएगा, कैसे आपकी प्रोजेक्ट आता है पहले, तो वो सब चीज मैं पहले फर्स्ट क्लास में, मतलब सेकंड क्लास में मैं बता दूंगा, जो बेसिक चीज होती है। उसके बाद जैसे आपके लिए कोई न्यू साइट की एस्टेब्लिश के लिए आया, या कोई हम्म। एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के लिए आया, कोई हम्म। एक्सेस पॉइंट इंस्टॉलेशन के लिए आया, थोड़ा सा इट विल हम्म। टाइम टेकिंग टाइम, बिकॉज ये देखो एनकोर ऐसे भी 2.5 महीने लग जाएगा। बट हम्म। थोड़ा सा इसीलिए पांच, मतलब 2-3 क्लास मेरा एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि हम्म। प्रैक्टिकल बेस्ड के लिए, ठीक है। तो ये अच्छा। मान लो 3 महीने के आसपास लग जाएगा, क्योंकि आपको अगर मैं ट्रबल शूट की प्रैक्टिकल कैसे होता है ना नहीं बताऊंगा, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपको क्लियर करने के हम्म। लिए, ठीक है। तो अच्छा। आफ्टर 2 to 3 क्लास या 4 क्लास, एक दो सेशन हम रखेंगे कि थोड़ी बहुत वो मतलब प्रोजेक्ट टाइप की हम कैसे, मतलब डायग्राम बना के मैं लाऊंगा। फर्स्ट स्टेप हम्म। क्या होती है, सेकंड क्या होती है, और हम्म। जैसे बड़ी एनवायरनमेंट में आप काम करोगे, डायरेक्टली ऐसा नहीं होता है, आपको सिक्योरिटी के पास जाना पड़ता है, आइस में क्या करना होता है एक स्विच के लिए, टैकक्स के लिए क्या करना है, ये सब चीज आपको रेडी इंटरव्यू का बताना है। अच्छा। आप काम करो नहीं करो, सिंपली सर ऑन डेली basis I am implementing the switches and I am working in the project team. So whenever any new site come, I am establishing that one, and any kind of extension project, switch extension or router we need to put, we are configuring the router, and sometime we are getting the wireless implementation or the access point implementation, that time we are following this process. At least आपको तो L1.5 L2 की काम तो बताना ही चाहिए ना। हाँ सर। तो एल्स अगर सिर्फ थियरी थियरी पढ़ाते चला जाऊंगा, जीएनएस में आपको दिखा दूंगा, तो आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी बेनिफिट। सो थोड़ा सा टाइम टेकिंग, बट आई नीड टू गिव यू द प्रैक्टिकल एक्सपोजर। ओके, उसके लिए मैं डायग्राम लेके आऊंगा, और क्या सिनारियो मैं प्रिपेयर करके आऊंगा, ताकि मैं थोड़ा सा कम टाइम में आपको सारा चीज समझा दूंगा, देन आई विल शेयर विथ यू। ओके, ओके। अब बताओ सर, आपने अपना जो भी है डाउट क्या है, फिर देखेंगे। सर ये नेक्सस स्विचेस होती है 4 के सीरीज और 9 के सीरीज, ये डेटा सेंटर में यूज होती है मोस्टली। देखो, मोस्टली डाटा सेंटर में यूज होती है, ठीक हाँ है। हाँ। बट हम्म। ये है, अगर मेरे क्लाइंट के पास ये थोड़ा, मैं आपको जैसे ये वाला एक टॉपिक है, रुको मैं दिखा रहा हूँ आपको। हम्म। क्योंकि सही अभी मैं जो काम सही कर रहा हूँ, सही क्वेश्चन पूछा आपने। हाँ हाँ, क्योंकि अभी मैं जो काम कर रहा हूँ बैंक ऑफ अमेरिका, वहाँ पे जो भी स्विचेज है सारी 9 के और 4 के सीरीज का। ओके। मतलब कैसे तो होगा आपका? हाँ, वो सब कुछ तो हम डेली बेसिस पे उसके मॉड्यूल चेंज, सुप कार्ड चेंज करते हैं, कभी कुछ इश्यू होता है तो इज लाइक वो असेंबल टाइप है। अगर सुप कार्ड खराब है, आप सुप कार्ड निकालो, नया सुप कार्ड इंसर्ट नहीं, करो और आप बैंक ऑफ अमेरिका के लिए जैसे काम कर रहे हो, तो आप हम्म। थोड़ी फिजिकली कर रहे हो, आपको तो रिमोटली नहीं, ही बैठा होगा ना रिम- वहाँ पे। हाँ वो रिमोटली बैठा है, पर एक हाँ फिजिकली जो स्विच हमने देखने को मिला फर्स्ट टाइम, हाँ कि नेक्सस हाँ, स्विचेस कैसे है, जैसी चलता है वो है। पूरा, यस यस यस। ये मॉड्यूल वो बेस्ड होती है। हाँ हाँ, हाँ। मॉड्यूल बेस। तो हम्म वो थोड़ा जैसे वो लोग क्या है कि कुछ सुप कार्ड खराब हुआ, सुप कार्ड निकालते हैं और नया सुप कार्ड इंसर्ट करते हैं, ये उसके बाद सूप वो जो होती है आईओएस। ना, सूप जो होती है ना, आपकी ब्रेन होती है, जैसे आपकी ब्रेन होती है राइट ना, जो राइट सूप राइट। होती है ना, सूप इंजन जो होती है नेक्सस के, क्योंकि मेरा जो एक्सपर्टाइज है, अगर मैं बोल रहा हूँ, एंटरप्राइज की होती है, वायरलेस की होती है, डेटा सेंटर की होती है। जो सुप कार्ड आपकी होती है ना, सुप कार्ड वो ब्रेन होती है, ठीक है। ओके नेक्सस 9 4 के लिए कितना सुप कार्ड मुझे चाहिए, ठीक है। लेन ओके। कार्ड कितना चाहिए, सुप के हम्म। साथ लेन की क्या कॉम्बिनेशन है, ठीक है। भाई मेरा भाई भाई। लेन कार्ड खराब हो गया, मुझे क्या करना है, बट अगेन आई एम टेलिंग, तो वो तो देखो नेक्सस में यहाँ पे है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये हम्म। एंटरप्राइज है, ये डीसी की राइट। क्लास नहीं है, तो हम्म। नेक्सस नहीं है। बट अगर आपको जानना है नेक्सस के बारे में, देखो पूरा तो मतलब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नहीं, वो डीसी। नॉर्मली जस्ट मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि हाँ, हाँ।
तो बेसिक आपको मैं बता दूंगा, मतलब हम्म, कैसे सुप कार्ड की काम करती है, लैन कार्ड क्या होती है, ठीक है। हाँ। और नेक्सस कैटलिस्ट के डिफरेंस क्या होती है, ठीक है। और हम्म। नेक्सस में जो मेन फीचर होती है, अगर आप सुना होगा तो वीपीसी करके एक फीचर होती है, ठीक है। VPC, अच्छा। हाँ, दोनों यहाँ पे तो देखो, जो 9200 कैटलिस्ट होती है ना, वो हम्म। स्टैक के थ्रू जुड़ते हैं। हम्म। 9500 जो होती है ना कैटलिस्ट, हम्म। वो एसवीएल के थ्रू जुड़ते हैं। फोर हम्म। फाइव डबल जीरो 6500 वो वीएसएस के थ्रू जुड़ते हैं। और जो राइट। नेक्सस वो वीपीसी के थ्रू जुड़ते हैं। वीपीसी में दो डिफरेंट आईपी होता है, यहाँ पे तो सारा ओके। सिंगल आईपी होता है। बीपीसी में वो दोनों एक स्विच है बट डिफरेंट आईपी होती है, ठीक है। हम्म। वो बीपीसी का कंसेप्ट मैं थोड़ा सा बता दूंगा, क्योंकि जैसे आप राइट, बोल रहे हो राइट। कि नेक्सस में काम करते हो तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इट विल टेक हम्म। जस्ट 1 आवर, तो हाँ, हाँ। कभी एक्स्ट्रा टाइम निकाल के, ठीक है, श्योर। आफ्टर क्लास मैं ये चीज आपको बता दूंगा। बट ये अपने इंडिया में काफी कम लेवल पे यूज होता है, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं क्योंकि नहीं, बस। 95% डाटा सेंटर में ओके, नेक्सस नेक्सस स्विच। यूज होता है। और आपके पास ओके। बड़ी साइट है ना, मैं मेरे बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे हाँ, हमारा हाँ। कुछ कुछ क्लाइंट है, नॉर्मल है, बट दे आर यूजिंग द डाटा सेंटर टेक्नोलॉजी फॉर देयर सर्वर। ओके। उनको चाहिए, कोई छोटा साइट है जिसके पास पैसा नहीं है, वो N3 के खरीद रहा है। और हम्म। N3 का एक उसको बोलते हैं वाली एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ओके। N3 के भाई मैं आपको ला के दे रहा हूँ, मेरा सर्वर वहां पे सारा डालो थ्रू हम्म। वीपीसी, हम्म। ठीक है। तो नेक्सस जो है ना, वो डाटा सेंटर की टेक्नोलॉजी है। पहले आपको एंटरप्राइज सही से आना चाहिए। देन देखो, ये मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ कि एंटरप्राइज में पैसा नहीं है, नहीं, अगर आपके हम्म। पास स्किल है, पैसे है। बट समाउ क्या होती है कि अगर आपको एंटरप्राइज भी आ रहा है, आपको वायरलेस आ रहा है, आपको डाटा सेंटर आ रहा है, तो आप इजीली क्या होती है कि अगर आप मतलब जो हमारा फेफर एमएनसी है, ठीक है, टीसीएस की बात कर लो, एचसीएल की बात कर लो, ये क्या होती है कि थोड़ा ये पैसे के मामले में आपको भी पता है, थोड़ा कम देते हैं बाकी जो फॉरेन एमएनसी होती है, ठीक है। राइट, राइट, राइट। बट ये भी, क्योंकि वहां पे जॉब बहुत सेफ होती है, ठीक है। तो ये क्या होती है कि अगर आपको ये तीन चार टेक्नोलॉजी है ना, इन इजीली यू कैन गेट 28 to 30, क्योंकि ये फेफर जो होती है ना, ये ज्यादा पैसा नहीं देते हैं, आपको भी बताया, ठीक है। तो बट वहां पे भी आप 30 32 निकाल सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब ये फेफर में, बाकी में तो देखो बहुत बहुत देते हैं। तो ये जो फेफर हमारा एमएनसी है, ये जो नहीं देते, वहां पे भी आप इजीली निकाल सकते हो 30, ठीक है, ओके। अगर आपको दो तीन टेक्नोलॉजी आता है। क्योंकि वन ऑफ द एमएनसी में भी हूँ, तो आप इजीली निकाल सकते हो, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ओके, राइट, राइट। ओके, सो और किसी को क्या जॉब के बारे में, मतलब कैसे इंटरव्यू क्लियर करना है, क्या कुछ भी डाउट आ रहा है? क्योंकि मैं जैसे फर्स्ट टाइम मेरा करियर शुरुआत किया था, बहुत डाउट आया था, तो पूछो। तो 3 4 मिनट है, तो 5 मिनट में डाउट क्लियर करके फिर विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट डे। तो किसी को कुछ भी डाउट पूछ लो, डाउट लेके मत जाओ। मैं अपना सीन स्टॉप कर रहा हूँ अभी। हाँ, बताओ, किसी का कुछ भी डाउट? सर ये हेलो। ट्रेनिंग हेलो आवाज थोड़ा स्लो आ रहा है, हेलो बताओ। हम्म। आ रहा है सर आवाज? हाँ जी, अब आ रही है, बताओ। यस सर जी। सर मेरा एक डाउट था कि ये ट्रेनिंग करने के बाद नहीं, आपकी हम बैकग्राउंड से जब कुछ आवाज आ रहा है इंटरव्यू वगैरह। शायद, मुझे थोड़ा नहीं आवाज सर, नहीं आ हमारे रहा है। बैकग्राउंड का थोड़ा अगेन अगेन बोलिए, अगेन बोलिए थोड़ा। हेलो अब आ रहा है सर? हाँ सर, अब आ रहा है, बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ये ट्रेनिंग करने के बाद हम कौन से लेवल का इंटरव्यू वगैरह के प्रिपेयर हो जाएंगे? आप यही पूछ रहे हो ना कि आप इस ट्रेनिंग करने के बाद इंटरव्यू प्रिपेयर हो पाएगा ये नहीं, यही क्वेश्चन है ना आपकी? हाँ, और लेवल भी सर। है? लेवल L2 लेवल L1, what? यस। नहीं, आप अभी किस में काम कर रहे हो, मतलब आप अभी काम मैं किस अभी में कर रहे सर, हो? मैं अभी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑपरेशंस देख रहा हूँ सर। ठीक है, आईटी में ऑपरेशन, मतलब नेटवर्क की ऑपरेशन आप देख रहे हो, मतलब नॉक टीम आजकल तो सीप ऑल एंड, ओवर ऑल ओवर ठीक है, लोकल तो फिलहाल आप, लोकल। ओके, फिर आप नॉक में काम कर रहे हो, तो राइट नाउ यूर L1, ठीक है। जो एन सीसीएनपी होती है ना, एनकोर एंड एनआरसी, दैट इज L3 लेवल। क्योंकि उसके बाद करेक्ट आप सर। जैसे सीसीआई में जाओगे ना, ओनली 3 टॉपिक बिलीव में, उसके बाद आपको एसडीए मिलेगा। एसडीए यहाँ पे भी आप थोड़ा नॉलेज लेके जाओगे, SD-WAN मिलेगा जो कि यहाँ पे थोड़ा नॉलेज लेके जाओगे, ऑटोमेशन मिलेगा, 3 चीज होती है, कोई ज्यादा नहीं होती है सीसीआई, जो कि एक्सपर्ट लेवल होती है। तो सीसीएनपी इज L3 लेवल। बट जो है, मैं जो ऑलरेडी आपको हाईलाइट कर चुका हूँ, किसी का आवाज आ रहा है कुछ, म्यूट कर दो। पर करके है सर जी। हाँ, पी पी कुमार कौन?
भाई कोई सो गया क्या? Yes, like P Kumar. तो यही है, देखो जैसे कोई भी क्लास मेरा खत्म होगा ना, मतलब देखो हर क्लास के बाद आपको मैं वो नहीं दे पाऊंगा, मैं मतलब झूठ क्यों बोलूंगा आपको, हर क्लास के बाद अगर मैं आपको एक लाइव सेशन दूंगा ना प्रैक्टिकली, तो वो हो जाएगा 6-7 महीने, बट एवरी 2-3 क्लास आई विल स्पेंड माई 1 आवर। ठीक है, क्योंकि ये क्लास ज्यादातर 2.5 महीने की होती है आपके लिए, मतलब सारे बैच के लिए जो होती है 3 महीने में करता हूँ, क्योंकि रीजन कुछ मुझे चीजें देना होती है प्रैक्टिकल, जैसे आप क्लियर करोगे। ठीक है, सिर्फ पढ़ के कोई फायदा नहीं होती है। सर आप रिमूव कर दो तो ना इनको, कौन है पी कुमार? नहीं चलो ठीक है, उसको रहने दो। हम्म, ठीक है, तो एक चीज है, तो वो मैं प्रैक्टिकली आपको दूंगा, बट अगेन आई एम हाईलाइटिंग, चीज तो मैं यहाँ पे बता दूंगा, प्रैक्टिकली बता दूंगा, बट जो मंडे टू फ्राइडे देखो पढ़ना आपको है। हम और एवरी मतलब 3-4 क्लास के बाद या 1 महीने में एक हम वो सेशन भी रखेंगे, सबका जो भी डाउट है, मेरा कुछ डाउट है, आपका कुछ डाउट है, ठीक है, हम आपस में शेयर करेंगे, मैं कुछ पूछूंगा, आप कुछ पूछोगे, ठीक है। 1-2 इंटरव्यूअर कैसे पूछता है, मतलब मैं देखो किसी बंदे को पर्टिकुलरली मैं नहीं पूछूंगा, जिसको आता है वो बोलना, ठीक है। जैसे कोई दोनों स्विच में दे दिया भाई, लिंक जुड़ लिया, ट्रैफिक कैसे फ्लो होगा, ठीक है, ताकि इंटरव्यू के लिए जैसे खत्म हो जाएगा ना, आप यू कैन अटेंड द इंटरव्यू इजीली। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप पहला इंटरव्यू दोगे आप माइक्रोसॉफ्ट में क्लियर कर लोगे, नहीं, तो आप इंटरव्यू ना इजीली जैसे हो जाएगा, मतलब आप ब्लैंक नहीं बैठ जाओगे, मतलब एटलीस्ट 70-80%, आजकल तो इंटरव्यू चाह रहा है कि 95% बंदा चाहिए मुझे, तो आप जैसे 80% स्टार्टिंग में ना फास्ट इंटरव्यू 80-85% दे दोगे, ताकि सेकंड थर्ड दिन में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल बेस्ट वो प्रोजेक्ट वो बहुत मतलब जरूरी है, जो कि मैं आपको दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। 15 to 20 प्रोजेक्ट तब तक हो जाएगा जब तक मेरा क्लास खत्म होगा। हम्म, ठीक एक्सपेक्टेड है, सैलरी कितना मार्केट में अभी चल रहा देखो है वो सिटी बाय सिटी और हम्म, सैलरी सैलरी वो डिपेंड करता है, देखो आपकी स्किल के ऊपर, सही बताऊं आपकी लास्ट विथड्रॉन सैलरी कितना होती है। सैलरी देखो नेटवर्क इंजीनियर ना 2 करोड़ भी ले रहे हैं, राइट। और 2 लाख भी ले रहे हैं, तो इट्स डिपेंड ऑन योर स्किल। ठीक है, बट सीसीएनपी के बाद और 1-2 टेक्नोलॉजी अगर आप सीखोगे तो मार्केट में जॉब बहुत है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ फ्रेशर, मतलब जो फ्रेशर होता है उसको, हाँ ठीक है, जो कंपनी चाह रहा है कि 1-2 साल मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, बट आप किसी भी फील्ड में काम करो कोई इशू नहीं है, कोई आपको चेक करने के लिए नहीं आता है फिजिकली। आपकी जो थर्ड पार्टी वेंडर होती है ना, वो कंपनी से चेक करता है कि बंदा सही में काम कर रहा था या नहीं कर रहा था। झूठे एक्सपीरियंस मत दो, मतलब आप सर्विस डेस्क में काम कर रहे हो इट्स ओके, बट आपको बोलना है कि भाई मैं नेटवर्क L2 में काम कर रहा हूँ। कोई नहीं देखता है जाके भाई आप स्विच में काम कर रहे हो या फायरवॉल में काम कर रहे हो या कोई लैपटॉप पकड़ के काम कर रहे हो। राइट, ऐसा अभी मेरे साथ, जैसे मैंने लास्ट में एयरपोर्ट पे था तो वहाँ पे हम स्विचेस जो है कॉन्फ़िगर कर रहे थे। ठीक है, अभी मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे क्या रीड एक्सेस है ओनली, ठीक है, बैंकों में वो नहीं प्रोवाइड कराते आपको कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। हाँ, तो लस्ट मैं मेरा सीवी में ऐड कर सकता हूँ कि मैं इन इन सीरीज पे काम, स्विचेस पे काम कर चुका हूँ, आपको एटलीस्ट थोड़ा आइडिया मैंडेटरी है ना मुझे। हाँ, मैंडेटरी ऐड करना है, आप कभी मत लिखना कि आई हैव द ओनली रीड ओनली एक्सेस। या नो, राइट राइट, हाँ योर वही। सीपी विल बी रिजेक्टेड। यस राइट, हाँ तो आपको क्लीन लिखना है आई हैव द L3 कॉन्फ़िगरेशन लेवल, आई हैव द हाँ हाँ, L3 एक्सेस। मैं राइट बता राइट, दूंगा हाँ क्या मतलब कैसे प्रोजेक्ट आता है क्या होता है उसका, वो हाँ छोड़ हाँ। दो, बट सीपी में ये चीज की गलती मत करना। क्योंकि जो नॉर्मल कंपनी होते हैं वो और आपको इंटरव्यू सैलरी प्रोवाइड नहीं कराते प्रॉपर ही, ठीक है, और जो एमएनसी कंपनी होते हैं वो देती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा स्विच किया था इस तरफ। हाँ देखो वो तो हाँ सैलरी आप तो जितना हाँ स्विच कर लोगे उतना कर पाओ, मतलब सैलरी हाँ, ले लोगे आप, स्किल कर लोगे, बिल्कुल, हाँ सैलरी हाँ, तो मिल ही जाएगा, सैलरी का कोई राइट, ऑडिट नहीं है, हाँ आपको उसके वही। साथ जॉब की सिक्योरिटी भी देखना है, सब चीज देखना है। जैसे एग्जैक्ट। आप ना 25 या 30 के आसपास पैकेज में आ जाओगे तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जॉब सिक्योरिटी भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 30 के से आप जंप करोगे 40 में तो इतना इजीली नहीं मिलता है, तो आपको राइट स्टेबिलिटी भी चाहिए। ठीक है, तो राइट। उसका टेंशन मतलब मैं दे दूंगा 15-20, ऑलरेडी आई हैव रिटन मल्टीपल टाइम्स हम्म कि उसका मैं दे दूंगा, खुद बना के लाऊंगा और आपके साथ मतलब यहीं पे डिस्कस करेंगे, देन ऑन आई विल शेयर विथ यू मेल, या कैसे करेंगे इंस्टीट्यूट के थ्रू हम देखेंगे। ठीक है, राइट। और कुछ मनीष करके कोई बंदा है, आपका कुछ डाउट? मनीष। आई एम मानस एंड समवन इज मनीष, सो म्यूट में हो भाई, कुछ डाउट? ओके, इज इन म्यूट। ये है क्या नाम है, पार्थ पार्थ क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है? पार्थ, यस, PARTH। हाँ पार्थ, आप कुछ डाउट? वही होता है। अरे क्या बात करते हैं, वो भी म्यूट में। वही होता है।
P Kumar. मैं नहीं खा रहा, यही है पासवर्ड। और कृष्णा गर्ग। यार सारा म्यूट में हो। सर हेलो। हाँ जी सर, क्या डाउट है क्या कुछ? नहीं सर, वो सब तो क्लास चलेगी, अपना जो डाउट होंगे साथ ही साथ क्लियर करते रहेंगे क्लास में। ठीक है बाकी आप तो थोड़ा। टेंशन था ना सर। हाँ ठीक है तो और कुछ डाउट है या आज के लिए क्लोज करें, फिर विल मीट टुमारो। यस यस क्लोज यस। ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच, आपने थैंक यू 2 घंटे कंटिन्यू बोलते रहे। थैंक यू, नो प्रॉब्लम। थैंक ओके यू, विल मीट टुमारो। सर सी यू, थैंक बाय बाय। बाय बाय। हैव अ नाइस डे, बाय। यू। ओके ओके।